You are not audible. Am I audible now? ये जयेशपुर कोटी करो. जयेशपुर जगत सिंहपुर. Okay, SBM. Okay. Okay. Is everyone there? Good morning. Good morning. Good morning. Yes. Government Women's HSS Sambalpur. Yes, the class has already started. ठीक. चलो. Today's topic no, is a very interesting topic on the structural organization in animals. ठीक है. ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ଦୁଇଟି close relatives from the other phyla ଦେଖିବା. ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମର cockroach ଭାଇନା, the other is bengo ଭାଇନା. Yes, cockroach and bengos, I mean the frogs. ठीक है, fine. So we had first the frogs in the first session, and that was followed by the cockroach in the second session. Kintu I would take the cockroach first because it belongs to arthropoda, and then I'll go with the frog because it belongs to the class amphibia. ठीक है. फाइलम आर्थ्रोपोडा जेहेतु कॉकरोच टी आगे क्लास इंसेक्टा देखी दवा. ठीक है, according to its complexity and the classification in the animal kingdom. ठीक है. And then we'll go into frog because it is slightly more sophisticated. अरे बुझू चरे, is that clear? Yes. Chalo, good morning all. Fine. A very nice winter morning to you people. The weather must be fabulous. है ना? ठंडा ठंडा लागू थी वो. And मन कर रहा होगा सो जाओ, किंतु सोना नहीं है. This is the time. Need to work hard. ठीक है. चलो. Let's begin then. Fine. Now, amaro NEET रे we had three topics. That is specimen study and relating with the various morphological and anatomical aspects. Tinta kon thila. One was the arthropoda cockroach ba class insecta cockroach. Then phylum Annelida, the earthworm, that is Ferrithima postuma. And the third one was from the class amphibian, that is frog. But the syllabus has been modified and a earthworm has been deleted. Okay, our earthworm nahi. Secondly, insect cockroach and frog. Duty chile. Usme cockroach which is there, usme cockroach is not available in the NCERT textbook. NCERT textbook रे cockroach nahi. बुझला? किंतु NEET syllabus रे cockroach is there. Okay. So therefore, जेहेतु cockroach nahi तमरो उधरे NCERT boy रे, so that makes this session of today important. तो इसे note कीजिए. Fine, study it, understand it. Okay, chalo. Let's begin then. And every NEET examination, at least 2 questions are there related from this portion of the chapter. ठीक है. Cockroach गोटे question पढ़े, जेहेतु ना ही एक question आ जाता है. And frog में से at least एक या 2 questions आते. Okay. Oh, now let us look at the various characteristics of cockroaches and understand them. Okay. See. Good morning all. ठीक है.
we have already started. So now let us focus. Okay. Now, basically, प्रथमे classification part को आसिबा. Let us first look at the classification. Now, classification रे, when you talk of the specimen, that is cockroach, phylum arthropoda है, phylum arthropoda, ठीक है. Okay, class insecta, genus Periplaneta, species Americana. So therefore, the cockroaches are commonly referred to as, or scientific name of cockroaches is Periplaneta americana. Monroe. Okay. Class is insecta, phylum is arthropoda, ठीक है. Family is Blatta or Blattidia, ठीक है. वगैरह वगैरह. Those are not required for you. इतनी की जिनसे at least Monroe दरकार. इसकी और एक form आती है. That form is known as the Blatta orientalis. ठीक है. But the most common is the Periplaneta americana. ठीक. Now let us look at the characteristics of the cockroaches. They are nocturnal, means nocturnal माने active at night, active during night. राति बेला जो माने active होती तांकु nocturnal कोई थांती. दिन बेला active चले कौन कौन थी diurnal कोई थांती. Okay. Then they are omnivores. Omnivores माने से माने किसी भी खाई परिवे. Can eat any food. ठीक है. Basically, they are vegetarian as well as non-vegetarian. Means herbivorous भी ही परिवे, carnivorous भी ही परिवे. Therefore, you call them omnivorous. ठीक है. All eating. And को प्रकार जगह प्रेफर करी थांती damp places माने उदा संसंतिया नो जगह जोटी की लाइट कम जाउथिबो अंधार जगह हिथिबो से जगह बेसी माने पसंद करथान. Okay. Now, if you look at the color of the frogs, they are basically brownish or blackish. They have bright yellow and red green colored also cockroaches are seen in tropical regions. Normally brown or black color देखा हुआ थी. This is the normal cockroach. It देखिबा अर्थिबो. This is this shape. I mean this coloration. It is a normal cockroach. ये आपको commonly हर जगह दिखेगा. Now these kinds of cockroaches, brownish, greenish, reddish, ये माने tropical regions से मिलता है. Means Amazonian forest, ठीक है. आपकी उस तरह की areas में ये आपको मिलेंगे. Normally हम घरे जो रही था cockroaches, they are dark colored, brownish or blackish. ठीक है. Size कितना है? 0.25 inches, ठीक है, to 3 inches अंकर size. Normally 0.6 to 7.6 centimeters अंकर length ठीक है. समझ में आया? 0.6 से 7.6 centimeters और 0.25 inch to 3 inch पर्यंत तो 3 inch का इनका मैक्सिमम साइज होता है ये कॉकरोचेस. फाइन. ठीक है. ओके. These are general characteristics. These are general characteristics of cockroaches. उसके बाद देखो. The adults are about 34 to 53 millimeters in length. Fine. Now, if you look at the structure, the body has a protective outer structure. Body has a protective outer structure which is made up of chitin. तो एमानंकर ये तो skeletal system पढ़िबो. ठीक है. तो you must have studied in the animal kingdom also. क्या पढ़ा है आपने? याद कीजिए. Here skeleton इबा skeletal system जदि हमें कहबा आंकर skeleton होची exoskeleton. Exoskeleton means the skeleton is located outside the body. Skeleton located outside the body. ए जिनसे उड़े मन रखो रे.
outside the body. Amara ko prakar skeleton achi ke koiba? What kind of skeleton do we have? हमारा किस प्रकार का skeleton है बच्चा? Yes, yes. Come on, make that quick. We have both exo and endoskeleton. Our primary skeleton is endoskeleton, that is bone, cartilage, ligament, tendons. And the secondary skeleton is the keratin, nails, hair. Okay, ये हमारा secondary. ठीक है? किंतु in case of cockroaches, they have only one type of skeleton. One type of skeleton, and that is exoskeleton. Means only located outside the body. Inside the body, they don't have any other form of skeleton. ठीक है? This skeleton is made up of chitin. Made up of chitin. Chitin रो composition कौन? N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine. ठीक है? बुझेगा? It is a homopolysaccharide. Homopolysaccharide. ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଲାଇନ୍ ଟି ମନେ ରଖିବ. Exoskeleton available only in cockroaches. Only skeleton available in cockroaches is exoskeleton. Exoskeleton टी ତାଙ୍କର କେବଳ present ଥାଏ. No endoskeleton. And made up of chitin. Chitin रो composition कौन? NAG, that is N-acetyl glucosamine. ठीक है? Fine. That is a homopolymer of glucose. ठीक है? समझ में आया? And ता संगे amine group अच्छी आओ. तो homopolysaccharide है. Okay. Then coming to the other parts. The exoskeleton which you see is made up of plate-like structures. तुम देखी पारती हो? It is in the ventral side रे plates अच्छी, in the dorsal side रे plates अच्छी. The body सारा plates गुड़िका अच्छी. ये जो plates गुड़िका देखो जो हमें, these are made up of that same chitin. The plates are made up of same chitin. ठीक अच्छी. Sclerites जो हमें कहोचे, these plates are called sclerites. एमाने कोथरे तियारी हेचंती ना chitin रे तियारी हेचंती. ए sclerites को हमें तीनोटी टाइप रे डिवाइड करी परिबा. तीनोटी टाइप. Now see, suppose तमे गोटा cross section नेलो. ठीक अच्छी. Cross section नेलो. एटा ऊपर section, एटा तଳ section. Okay. ऊपर section, तଳ section. तापरे एई दुईटी को कनेक्ट करिकी साइड रे भी मध्य गोटे लैटरल सेक्शन अछि. तो डॉर्सल, ventral and lateral. Basically you have three sections. Dorsal, ventral, lateral. Okay. Dorsal टी को हमें कोई थाउ tergites. Dorsal is known as tergites. ठीक है? Tergites. ये इनको आपको दें. मुझे गरम लगे ऑन कर दीजिए. Tergites. Ventral को बोलते हैं sternites. Thank you. Lateral को कहवा pleurites. Okay. अरे क्लियर है बच्चा? Dorsal tergites, ventral sternites, and lateral pleurites. Is that clear, people? ठीक है. अरे इजी रे मन रखिया किसी ने ऐसे रे. हो. चलो बढ़िया. ओके फाइन. ठीक अच्छे. इट्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर. देखो जेमती तमर माने आम केस रे जदि ऑब्जर्व करिवा आमर चेस्ट रीजन रे
चेस्ट रीजन रे एटी कौन अच्छी स्टर्नम मन रहिबो अरे स्टर्नम माने ब्रेस्ट बोन जाको हमें कहूचे एटी सामने रहिला दिस इज योर स्टर्नम ठीक अछि तो सेई स्टर्नम टी को पटे रहिला हमरो पेट पटे वेंट्रल साइड तो सेई टू नाडी असलो स्टर्नाइट बुझ पालो स्टर्नम स्टर्नाइट क्लियर अच्छा जेतु साइड रे रहिला हमरो साइड रे कोन रहिची यस लंग्स साइड रे मन पका प्लूरा रहिची कवरिंग इट तादु नाडी आइला प्लूराइट ठीक अछि टर्गम रो आइला टर्गाइट डॉर्सल साइड तो तीनोटी रीजन रहिला टर्गाइट रहिला ठीक अछि को पटे डॉर्सल पटे देन वेंट्रल पटे कौन रहिला ना स्टर्नाइट रहिला लैटरल पटे कौन रहिला ना प्लूराइट रहिला ओके ओ नाउ एटी आउट जिनस अछि दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड जेडा कोन since these are like plates जेमती फॉर एग्जांपल इमेजिन घरे तुम मानकर फ्लोरिंग एटसेट्रा की कांतो एटसेट्रा जो हेइथिवो उसमें आपने टाइल्स यूज किए होंगे यस टाइल्स को एमती जोड़ी के रखु छ है ना बट आर दे मूवेबल नो फिक्स्ड है तो एठी जदी एक आमे कहूचे कि आंको बॉडी रे एई गुडी को थांदी प्लेट्स आकारे प्लेट्स बट जदी से प्लेट्स आकारे थांदी एंड से टोटल प्लेट्स गुडी को सब में जोड़ी दवा टोटली तो एमाने मूवमेंट केमती करिवे हलिवे केमती बेंड केमती हेई परिवे कांट बट दे कैन फ्लेक्सिबल ऑप्शन से माने क्वेश्चन इज कि फ्लेक्सिबल केमिति हेले तो जेमती आमो बॉडी रे मध्य बोन्स एटसेट्रा को मझिरे जॉइंट अछि बोन्स दुईटी बोन्स मझिरे जॉइंट अछि ताहले ही से मूवेबल हे पड़छि ओनली रीजन व्हाई no the bones are capable we are capable of moving we are capable of showing movements why because the bones are connected with the help of joints so at the point of the joint you are able to bend the structure same way these plates are also connected these plates are also connected ethi gote plate mojire मझिरे कौन रहिबो आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन जस्ट अ सेकेंड लेट मी शो दैट टू यू ठीक है तो एडी देखो से दिस इज अ प्लेट दिस इज अनदर प्लेट ठीक है नाउ between the two plates you have another structure that joins them together. This is known as the arthroidal membrane. it लिखा है देखो arthroidal membrane. ये arthroidal membrane टी flexible nature काहे की ये आपकी connective tissue से बनी है ठीक है so it is elastic in nature fine flexible in nature. Okay, so it is with the help of these arthroidal membrane that they are so flexible they can show or display movements. Ikochi. So basically, thin and flexible articular membrane known as arthroidal membrane. Body has three regions: head, thorax, and abdomen. आंको बॉडी टी हमें तीनोटी पार्ट रे डिवाइड करी पारिबा यू कैन डिवाइड द एंटायर बॉडी इनटू थ्री पार्ट्स ठीक है मार्क करो रे बच्चा एटा आला मुंडो हेड पार्ट ठीक है ये वाली जो पार्ट है ये है थोरैक्स एटा आला हेड पार्ट ठीक है ये हेड वाली पार्ट हो गई दिस इज हेड दिस इज थोरैक्स and this is abdominal section. Head, thorax, abdomen. The entire body is divisible into three sections: the head, thorax, and abdomen. Now, 80 तुम्हें animal kingdom को तुझे मौने पकाओ, ठीक है? And this is the reason why first year में animal kingdom बहुत important होता है. कौन मन पके वो? इधर तुम्हें यही जो जिनसटी पढ़ी लो head, thorax, abdomen. ये किस section में आता है? ये को पार्ट रहा सूची? This is called
सेगमेंटेशन मन पड़ला रे हैं जागो ग्राहक जागो जागो ग्राहक जागो come on wake up segmentation the segmentation is the process or mechanism in which the body can be divisible into various sections okay bujela fine okay fine so tergites ternites and pleurites head thorax and abdomen body segmentation is done okay fine I hope it's clear now people समझ में आ गया चलो बढ़िया है नाइस लवली थम्स अप थैंक यू वेरी मच okay now coming to the sections हर पार्ट में आ जाओ come to each and every part now let's see okay now describing the sections come to the head first let us look at the head first ठीक है just a sec okay now basically when we look at the head now before we go into the head region see in the slides here I have tried to display only important things and since these are not there in your NCERT therefore it will not be taught मन रखता ये only आपकी NEET syllabus में है that is the reason it is being taught to you so do not expect it to be taught anywhere else नहीं समझा जाएगा यदि न बुझा जीवो तो फिर आपको दिक्कत आएगी कहां पे in the NEET examination सती भाई please pay attention and it will be very important अगर आप ये important points I've only tried to keep the important points and basic understanding fundamentals तो आप ना इन points को note कर सकते हैं that will be essential you have enough time to simply write it down no problems in that and लिख लेने से एक बार ज्यादा easily याद होता है मोनेरो once you write it down by your own तो वो और easily याद रहता है it's a fact writing is a very essential component of learning क्यों it's simple muscle memory is a scientifically proven ठीक है concept means your fingers also have memory मार्क करियो सपोज आपको कुछ चीज याद नहीं आ रही है एग्जाम के टाइम पे तो आप ऐसे याद करते हो उस समय कर क्या रहे हो आप घंटू चौक है कुछ निकलेगा उसमें नहीं since you have practiced by writing so by simply doing it or mimicking the thing it creates a stimulus by virtue of which you recall things चीजें याद आ जाती है therefore writing is a very important component of learning therefore जो लिखोगे सही से ना याद रहेगा और चलो ध्यान दो fine now see this when you talk of the head is basically composed of 6 fused segments कितनी segments है बच्चा 6 fused segments है मुंडी the head comprises of 6 fused segments ठीक है it shows great mobility in all directions due to a flexible neck why flexible because it contains the same arthroidal membrane ठीक है the head bears a pair of what are present on the head a pair of thread like antennae these are the antennae which you see ठीक है a pair of compound eyes
a pair of compound eyes. ठीक है, ये as you can see in this figure, ये दो एंटीने हैं, ये आपकी कंपाउंड आई है. ठीक है, दूसरे पे आ गई बच्चा कंपाउंड आई. कंपाउंड आईज क्यों बोलते हैं? Why do we call them compound eyes? The reason is they have a particular kind of vision known as the mosaic vision. Mosaic vision. ठीक है, this mosaic vision का मतलब क्या है? देखो, basically suppose they look at a picture, they look at anything, कौनसी जिनिषों को यदि ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, तो मान लो आप अगर एक पेन पेंसिल या कोई भी चीज देख रहे हो, तो यू ऑब्जर्व इट एज अ होल, माने गोटिए जिनिष तुमको देखा जीवो. बट व्हेन यू विल लुक एट द विजन ऑफ दीज कॉकरोचेस, तो उनकी विजन कैसी होगी? पार्ट्स में, पीसेस में होगी. मीन्स जेमती जिक्सॉ पजल फ्रैगमेंट्स में पीसेस आती, ऐसा. तो एक चीज उनको ऐसे पीसेस में दिखेगी. से फॉर इंस्टेंस ये उनकी टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स है. तो यदि हमें इसे देखिएगा, तो सपोज मान लो वो लोग एक हाउस देख रहे हैं या फिर एक ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, फाइन. तो ताकू केमी दिसिबो, ऐसे दिखेगा पार्ट्स में. एटा गोटे पार्ट, एटा गोटे पार्ट, एटा गोटे पार्ट, एटा गोटे पार्ट, एक पार्ट, इस प्रकार अलग अलग पार्ट्स में उनको चीजें दिखेंगी. ताकू गोटे सिंगुलर स्ट्रक्चर दिसिबोनी, पीस 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 एक देखा जीवो, and those pieces will be close to each other, forming a structure. So that is why you call it compound vision. ये compound vision बा mosaic vision कहा जोगु होची? Because of structures present in them. जेमती आमर रेटिना अच्छी, आमर आखिरे रेटिना अच्छी, इन लोग की रेटिना नहीं है. इनमें क्या है? There are ommatidia. Ommatidia. Ommatidia are the structural and functional units of vision. आखी भीतर जमती हमारा फोन पे आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? फोन में आप ना लाते हो फोन, तो उसमें पढ़ते हो 50 मेगापिक्सेल्स, 100 मेगापिक्सेल्स, 20 मेगापिक्सेल्स वगैरह. कैमरा रो रेजोल्यूशन देखी कि तो मैंने नहीं किया. तो वो मेगापिक्सेल्स है क्या? पिक्सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स, किसकी? ऑफ कैचिंग दोज पर्टिकुलर इमेजेस. तो जितनी ज्यादा पिक्सेल्स होंगी, द इमेज विल बी दैट मच मोर क्लियर. उनकी रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा क्लियर होगी. सही डाला तुम्हारा पिक्सेल्स. तो बेसिकली इनकी ये जो ओमाटीडिया है, these are like pixels. मुझ वालों, ओके. देन इसके बाद अगर आप माउथ की बात करेंगे, माउथ इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ. बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ. ठीक है, रिमेंबर these are very important. They have a pair of antennae, they have a pair of compound eyes, ठीक है, for mosaic vision containing ommatidia, and they have the biting and chewing type of mouth. Means कामुड़ी पारिबे and चुबे मध्य पारिबे. ठीक है, ओके. Fine. Now, then coming to the parts of the mouth. No, this is a very important context. Why? यही जो डायग्राम टी देखो चो, इसकी लेबलिंग व नेमिंग, ठीक है, these diagrams were given. ठीक है, इन डायग्राम्स में A, B, C, D, E, F, G. ठीक है. So काहे की इट इम्पोर्टेंट, दैट्स आई एम टेलिंग यू. इसको आप ना याद कैसे रखोगे? एटलीस्ट
You don't need to draw these things. Nobody is going to ask you to do so. But suppose this is given in your question, ठीक है? A B C D E F G लिखा हुआ है. You must be knowing कि कौन सी पार्ट क्या है. No? ये मान लीजिए लैब्रम है. These are a pair of mandibles. These are a pair of maxillae. ये आपकी लैबियम है. ठीक है. एंड बीच में आपकी हाइपोफारिंक्स which symbolizes the tongue of the cockroach. ये है. तो लैब्रम, mandibles, hypopharynx, maxilla and the labium. ये बेसिकली हो गई आपकी जो स्ट्रक्चर्स है, 7 स्ट्रक्चर्स है इन दी माउथ ऑफ द कॉकरोच. तो ए बी सी डी ई एफ जी करके दे दिया. ठीक है ना. अब क्वेश्चन क्या पूछा, which of the statements, ठीक है, which of the statements with respect to the diagram are correct. ठीक है. तो ऑप्शन 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन दिया है. ठीक है, फाइन. एंड उसमें आपके 7 स्टेटमेंट दिए हैं. 7 स्टेटमेंट में पूछा. ठीक है. ए अंडरलाइन कर दिया, फिल द ब्लैंक्स जैसा. तो पहला हो गया ए लैब्रम, मानो ऐसा होता है लैब्रम. ठीक है, फाइन. is used for consumption of food. B grinding of food which is mandible. तो दुईटी जिनसे इधर बहुत चला. एक तो आपको उसका नाम पूछा जो मैच करता है, एंड उसके बाद उसका काम पूछा क्या करता है. So the questions which are asked can be asked in these kind of ways. नाम पूछेगा फिर काम पूछेगा. ठीक है. And you have to first match it, then name it, and then understand and remember its function. फिर उसके बाद कौन सी ऑप्शन, कौन सी स्टेटमेंट सही है वो देखेंगे. ठीक है. तो कॉम्बिनेशन देख दिया स्टेटमेंट्स की. ए बी सी करेक्ट, ए बी सी डी करेक्ट, सी बी डी करेक्ट, एफ जी एच करेक्ट, एफ जी करेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जो स्टेटमेंट्स करेक्ट अच्छी कि जो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट अच्छी उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेगा. तो नाउ द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं. ठीक है. तो बी केयरफुल विद दोस क्वेश्चंस. दिस आर नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है. अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आराम से कर लोगे. ठीक है, चलो बढ़िया है. तो देख लो लैब्रम भैया अपर लिप है, लैबियम क्या है, लोअर लिप. जैसे हमारे केस में होता है अपर लिप लोअर लिप. अपर लिप को हम लोग लैब्रम बोल सकते हैं, लोअर लिप को हम लोग लैबियम बोल सकते हैं. फिर अपर जॉ को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, सॉरी लोअर जॉ को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, अपर जॉ को मैक्सिला बोलते हैं. लोअर जॉ इज कॉल्ड मैंडिबल. ठीक है. अपर जॉ इज कॉल्ड मैक्सिला. एंड टंग को हम लोग हाइपोफैरिंक्स यहाँ बोलते हैं. मुझे लगा थोड़ा. तो लोअर लिप, अपर लोअर जॉ, अपर जॉ एंड दी टंग, दैट इज हाइपोफैरिंक्स. बस इतने में काम हो गया. क्या है इसमें, अपर लिप है, लोअर लिप है, लैब्रम, लैबियम. ठीक है. हाइपोफैरिंक्स क्या हो गया ना, टंग हो गया. कितनी मैंडिबल्स है, 2 है. कितनी मैक्सिला है, 2 है. अच्छा, ये मैंडिबल मैक्सिमम मैक्सिला कैसी है ना, काइटिनस है. काइटिनस है. किससे बनी है, काइटिनस से बनी है. ठीक है. तो काइटिन से बनी है. दे आर काइटिनस एंड दे आर एसेंशियल बाय यूजफुल फॉर ग्रैबिंग द फूड, कटिंग द फूड एंड क्रशिंग द फूड. ठीक है. फाइन. ओके. नेक्स्ट हेड रीजन गया. अब थोरैक्स रीजन में आ जाए. इफ यू कम टू द थोरैक्स सेक्शन, तो थोरैक्स सेक्शन क्या बोलता है भाई, दी जैसे हम में थोरैक्स सेक्शन इज चेस्ट रीजन, तो चेस्ट रीजन को हम लोग थोरैक्स कहते हैं. तो इनमें देखो वही सेम चीज है. हेड पोरो सेक्शन डी हेला थोरैक्स. थोरैक्स इज डिविजिबल इनटू 3 सेक्शंस. कौन सी, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स. जो रीजन थी તમારો हेड सांगे फ्यूज हो वो है प्रोथोरैक्स.
उसके नीचे बीच में आता है मीजोथोरैक्स, एंड फाइनली टुवर्ड्स दी नो रियर एंड वो आएगा आपका मेटाथोरैक्स। एज यू कैन सी इन द फिगर, आप फिगर में यहाँ देख सकते हो रे बच्चा, यस यू कैन सी इट इन द फिगर। देखो ये आपकी प्रोथोरैक्स रीजन है, दिस इज द प्रोथोरैक्स रीजन, ठीक है, समझ में आई बात ना। इस सेक्शन में देखेंगे ये मीजोथोरैक्स रीजन है, दिस इज द मीजोथोरैक्स रीजन, ये आपकी मीजोथोरैक्स रीजन है, ये प्रोथोरैक्स रीजन हो गई, ये मीजोथोरैक्स रीजन हो गई, ठीक है, फाइन। एंड आ तोड़कू फाइनली आपका मेटाथोरैक्स रीजन हो गया। ये प्रोथोरैक्स है रे बच्चा, ये मीजोथोरैक्स रीजन है बच्चा, एंड ये आपकी मेटाथोरैक्स रीजन, ठीक है। तीनों रीजन रोइला, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, क्लियर है? ओके, नाउ लुक इनटू इट। The head is connected to thorax by a neck short extension of the prothorax, ठीक है। So I just said prothorax is connected to the head, मुंडो करे लागिच। उसके बाद each thoracic segment bears a pair of walking legs, 8 देखी पार्थी वो, ये एक पैर है, this is a leg, 8 गोटे गोड़ा, ठीक है, इधर और एक लेग, इटा आगुटे गोड़ा, इस तरफ और एक लेग है, इटी आगुटे गोड़ा, इटी आगुटे गोड़ा। तो बेसिकली ये लेग्स है, कितनी लेग्स होती है रे बच्चा? 3 पेयर्स, 3 पेयर्स माने 6टी गोड़ा, 3 ऑन ईच साइड, ठीक है। एंड दीज आर कनेक्टेड टू दी वेरियस थोरासिक सेक्शंस, माने प्रोथोरैक्स रे गोटे पेयर, ठीक है, मीजोथोरैक्स रे आउ गोटे पेयर, मेटाथोरैक्स रे आउ गोटे पेयर, टोटल मिला के हो जाएंगे आपके 6, ठीक, ओके। उसके बाद देखो टाइप ऑफ लेग मोस्टली, अगर आप टाइप ऑफ लेग पूछ रहे, इन व्हाट एस्पेक्ट यू आर आस्किंग, इफ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द लेग, हाउ इज द लेग क्रिएटेड, और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, देन स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यू विल हैव द कॉक्सा, जैसे अमरोजेम थाई, दे आर मेड अप ऑफ काइटिन, जैसे आपकी हड्डियां होती है, बोन्स है हमारे में, इनमें आपका काइटिन ही होता है, बट डिविजन इज सिमिलर, जमती की अपर रीजन ने कॉक्सा, तापर ऐसे फेमर, तापर टिबिया, ठीक है, एंड उसके बाद आपकी अमर जमती डिजिट्स, 7 डिजिट्स नहीं, ठीक है, तो उसके बाद ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स आएंगे, एंड फॉलोड बाय एरोलियम। एरोलियम कौन करता है? आप देखोगे कॉकरोच जो है आपका, वो ना दीवार पे, ठीक है, दीवार पे प्लस दूसरी जगह पे आराम से चढ़ सकता है, and it can stay on those walls etc, आराम से चढ़ सकता है उनपे। now therefore since it can climb walls etc, तो केमती करि परिबो, चिपक के कर सकता है, it can stick to it and it can move on, fine, ठीक है। then अब उसके बाद देखो, if you look at the thorax section, there are 2 pairs of wings, एक फोर विंग्स, दूसरी हाइंड विंग्स, एज यू कैन सी ये आपकी 4 विंग्स है, ठीक है, फाइन, एंड ये आपकी हाइंड विंग्स है, फाइन। माने 4 विंग्स माने सिंपल सी भाषा में बोलने से, अगर 4 विंग्स मतलब जो आगे की तरफ है, हाइंड विंग्स मतलब जो पीछे की तरफ है, those wings which are located on the upper region, वो 4 विंग है, तो पीछे की तरफ है वो है आपकी हाइंड विंग,
बुजिला, ठीक है। नाउ फोर विंग्स बेसिकली ओरिजिनेट कहां से होती है? मीजोथोरासिक। यही सब जिनसे गुड़िको ये चैप्टर की इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें याद रखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। नाउ दोज पीपल हु आर एक्चुअली फॉलोइंग इट डूइंग द क्लास, इनको ये बहुत हेल्प करेगा, क्यों? देखने से समझने से आपको याद हो जाएगी। लेकिन जो लोग नहीं देख रहे, मिस आउट कर रहे हैं, आई एम टेलिंग कि उनमें डिफिकल्टी आएंगी। See, because this thing is not there in your textbook, but it is there in the syllabus of the NEET examination. तो वहां पे फिर से आपको दोबारा कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। See this. So four wings mesothoracic है, it is known as the tegmina. Mesothoracic है and known as the tegmina. ये opaque होती है, डार्क होती है एंड लेदरी होती है, ठीक है, and covers the hind wings and at rest. So the four wings are all known as the tegmina. They are opaque, dark, leathery and longer. बड़ी होती है, तो पूरी तरह से ये हाइंड विंग्स को कवर कर देती है। जबकि हाइंड विंग्स जो है ये मेटाथोरासिक है। The hind wings are metathorasic. That means they originate from the metathorax. ठीक है, ये आपकी पतली होती है। The transparent, membranous and are used in flight. समझ में आई बात? ठीक है, तो ऊपर की जो आपकी विंग्स हैं ये सिर्फ आपकी प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए है। They're only for protective function. ठीक है, लेकिन ये वाली जो है they are useful in flight. समझ में आया? रिमेंबर, ठीक है। फोर विंग्स, हाइंड विंग्स, फोर विंग्स mesothoracic, hind wings metathoracic. Four wings are thicker, opaque, leathery, and are protective by covering the whole body. Then hind wings are thinner, transparent, smaller, ठीक है, and used in flight. ठीक है, ओके। फिर आगे देखो, हेड गया, थोरैक्स गया, अब आती है एब्डोमेन की बारी। एब्डोमेन एज यू कैन सी, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज द वेंट्रल सेक्शन डिस्प्लेइंग द एब्डोमिनल रीजन। यही जो तोड़ो रीजन देखो जो मैं, ये यहाँ की एब्डोमिनल सेक्शन है। दिस इज द एब्डोमिनल सेक्शन। ये वाली पार्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एब्डोमिनल सेक्शन है, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ look into it. It consists of 10 segments. Consists of 10 segments. ठीक है? In females, these are very important. In females, the seventh segment. अब seventh segment मतलब देखो, as you can see in this figure. ठीक है? Figure में देखिए 6, 7, 8, 9, 10. चल टोटल देखिए बना, ये काउंट करिए, आरंभ करियो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, सेगमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 11 सेगमेंट्स हमको कौन इजीली दिखती हो। उन सेगमेंट्स में से इन केस ऑफ फीमेल्स जो सातवीं सेगमेंट है, सेवेंथ सेगमेंट विच यू सी हियर, ठीक है, ये आपकी बेसिकली बोट शेप्ड होती है। बोट शेप्ड होती है। क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर इन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पीवाईक्यू में है ऑलरेडी। कौन कोयला, which segment is the boat shaped or seventh segment in cockroach is dash shaped? Answer is boat shaped. ठीक है, and इसमें 8, 9 just आपकी नो सेगमेंट्स है, स्टर्ना है, they form a brood or genital pouch. ब्रूड और जेनाइटल पाउच, ठीक है। तो बेसिकली कोया गोले 7th, 8th, 9 जो सेगमेंट्स हैं आपकी, ये रिप्रोडक्टिव हैं, ये रिप्रोडक्टिव है, द हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। 7th, 8th and 9th, 7th, 8th and 9th, बुझेला, it contains the female gonopore, spermathecal pores and collateral glands. Now these are again all reproductive glands or reproductive structures,
ये सबु जिनस गुड़िक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ठीक है गोनोपोर जेमती in case of human females we have the reproductive tract starting from the vaginal or vulval section to the uterus section तो वो हमारी केस में इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स इट इज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सेम थी the opening of the reproductive tract in case of cockroaches that is female cockroaches is known as the gonopore उस गोनोपोर के बाद आपको क्या मिलेगा स्पर्माथिकल चेम्बर्स ठीक है ये इनमें होता क्या है टेम्पररीली व्हेन द copulation happens the sperms are temporarily stored in the spermatheca ठीक है temporarily stored in spermatheca and the collateral glands are the ones that help in lubrication ठीक है development etc we call him collateral glands तो कौन कौन है गला गोनोपोर स्पर्माथेका एंड कोलैटरल ग्लैंड्स आपका 7th और 8th और 9th क्या है जेनाइटल पाउच है 7th उसमें क्या है ना बूट शेप्ड क्लियर हुआ इट्स वेरी सिंपल नथिंग डिफिकल्ट इन इट ओनली you'll have to remember a few things which would be easy nothing difficult ठीक है अब उसी कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो फीमेल्स की बात गई अब मेल्स की बात आती है देखो when you look at the males in case of males it is slightly a different form ठीक वहां पे फीमेल के केस में मैंने 7th 8th और 9th देखा था यहां देखिए जेनाइटल पाउच यहाँ पे किधर है the genital pouch is located in the 9th and the 10th segments genital pouch in case of males it is 9th and 10th segments ठीक है and ये abdominal section में and ventral section dorsal section दोनों जगह है तो above that is dorsal section में 9th and 10th tergite है and in the ventral section the 9th sternum ठीक है contains the dorsal anus ventral male genital pore that is gonopore and gonophysi जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला in case of human females the vaginal opening or the vulvar opening is referred to is similar to that of gonopore comparable same way ठीक है the male copulatory structure that is the penile section is referred to as the gonopore ठीक है and gonapophysis gonopore and the gonapophysis clear so dorsal anus rohila ventral male genital pore rohigala and gonapophysis rohigala clear hai fine nothing is there in this simply you'll have to remember things these are based upon facts ठीक है तो फैक्ट्स अगर आप याद रखेंगे तो याद रहेगा मेल और फीमेल कॉकरोच और एब्डोमेन मध्य डिफरेंस कौन अभी तो आपको बोला 7th and 8th 7th 8th 9th segment if you look at in case of females it contains the genital pouch whereas in case of the males the 9th and 10th have the genital pouch with the 11th on the ventral side ujela so that is the basic difference between the abdominal layout in case of male and female cockroaches now externally यदि તમે કહું છો બહાર પોટું तो बाहर पोटू अगर आप देखोगे both the types of cockroaches ठीक है one a male and a female and another a female you cannot possibly identify them किंतु अगर आप in terms of internal anatomy देखेंगे then location of genital pouch in case of the human females is 7th 8th and 9th segments whereas in case of the males the 9th and 10th segment and it uses some part of the 11th ठीक है fine now
यहाँ पे आपकी क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान दीजिए। इन बोथ sexes the 10th segment bears a pair of jointed anal cerci, ठीक है। In both sexes the 10th segment contains the anal cerci, ठीक। Males bear a pair of short thread like anal styles। तो मेल और फीमेल एट बड़ो डिफरेंस की पड़ेगा। मेल में एनल स्टाइल्स होती हैं, फीमेल्स में नहीं होती, एब्सेंट, ठीक है। फाइन, देख लो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एट देखो जाओ, 10 सेगमेंट रू दुईटी कौन बाहर ना एनल सर्की बाहर तांकर जस्ट तळकू with a covering present, it is known as anal style. This is common to that of males in cockroaches. Only males of cockroaches have it, ठीक है। उजिला ना, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, तेज इंसर्ट को हैव डिस्प्लेड इन द डायग्राम, देख लो थोड़ा। सेज इंसर्ट को पिक्टोरियली देखेची, इसे एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। जस्ट आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व द नो स्टेटमेंट एंड द गिवन फिगर, यू कैन मेक इट आउट इजीली। अगर मेल फीमेल दो कॉकरोचेस आपके सामने रखी जाए तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई, दैट इज द थिंग, ठीक है। ध्यान दीजिए। In case of males, the size is larger. Females, the size is smaller. Wings extend beyond the tip of the abdomen. In case of males, in case of females, जेहेतु मैंने flight quarantine है mostly ये shorter होती है. Do not extend beyond the tip of the abdomen. Then narrow abdomen in case of males, broader abdomen in case of females. Anal styles present होती है males में, anal styles are absent in females. Brood pouch is absent in males but present in females. Kaiki? Because they will help in storage of the male gametophytes, male gametophytes, which will be there till the fertilization occurs. That temporary attachment or process, ठीक is what you can say, is not such an easy kind of process. So those sperms etc. that will enter into the female will have to be stored somewhere temporarily. Say जो region where it is stored, it is known as the brood pouch. ठीक है, उज्जैला। अब वेरियस सिस्टम्स में एक एक करके आएंगे into it. Now first of all observe the figure. ये एक फिगर क्या दिखाता है आपको? It displays the digestive system of the cockroach. Okay, the figure displays the digestive system of a cockroach. ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देखोगे तो क्या पता लगता है, देखो ध्यान से। The entire digestive system है elementary canal. Elementary canal माने कौन? The entire passage from the mouth to the anus is called, yes, the elementary canal. तो anchor मध्य elementary canal, ठीक है ना। I said ना, जब भी आप इस चीज को देख रहे हो, you remember the animal kingdom etc. तो वहां पे आपको याद होगा, इतना में डाइजेस्टिव सिस्टम को था कौचे, हम क्या लिखते थे? कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, याद आ रहा है? कंप्लीट का कहले जिते टू सेपरेट ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, वन माउथ, द अदर इज एनस, ठीक है, तो उसे आप कंप्लीट बोलते हैं। इनकम्प्लीट, वन साइडेड, वन ओपनिंग, ठीक है। कितनी पास हो गई इनमें? डिविजिबल, फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है।
foregut है, midgut है, hindgut है. So we will have three regions here: foregut, midgut, and hindgut. How are they distributed? What are their components? Let's see. It is the diagram देखो. If you observe the diagram, तो diagram से clearly समझ में आएगा. आपको ध्यान दो. Mark it out. This is the mouth section. ठीक है. Mouth में ये हो गई आपकी pharynx. ठीक है. Pharynx पर मार्क करो. देखो आपकी salivary glands है. Salivary glands के बाद आई esophagus. तापर असला temporary storage organ, that is the crop. ठीक है. क्रॉप से देन देयर इज अनदर कनेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं गिजर्ड. गिजर्ड में आपकी काइटिनस प्लेट्स होती हैं, ग्राइंडर बोलिया, दैट हेल्प इन दी मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड. आपस में रगड़ रगड़ के फूड डाइजेशन कर लेते हैं. देन कम दीज थ्रेड लाइक और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज हेपाटिक सिके. एमानो काम वाला डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स प्रोडक्शन करिबा. फिर उसके नीचे आएंगे तो ये मेजेंटेरॉन बा मिडगट बन गया. मेजेंटेरॉन या मिडगट बन गया. तो यही पर्यंत को पर्यंत आपकी गिजर्ड पर्यंत आप इसे नॉर्मली फोरगट के अंदर डाल देते हो. पर तापरे उसके बाद दी मेजेंटेरॉन और मिडगट विल स्टार्ट. ठीक है. यहाँ कहां तक आ गया? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स तक आ गया. आज यू हैव ऑलरेडी नोन इन योर एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशंस. उसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स माने कौन? प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम रे पड़थियो. मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर्स जे की तमरा एक्सक्रीशन करी थाए. ठीक है. तो एक्सक्रीशन के साथ ये आपकी फूड जो अनअब्सॉर्ब फूड मटेरियल एक्सेट्रा मध्य करता है. ठीक है. तो बेसिकली मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हो गया, देन इलियम हो गई, कोलोन हो गई, रेक्टम हो गई. ये आपकी हाइंड गट में आती है. इलियम, कोलोन एंड रेक्टम. ठीक है. फाइन. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फोरगट की पार्ट में आओ. फोरगट रे कौन है गला? इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल. फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल. Cuticle, a waxy coating or a structure covering the entire alimentary canal. That is cuticle. ठीक है. Now, the foregut includes what? Mouth है, pharynx है, esophagus है, crop है, gizzard है. So from mouth to gizzard is basically the foregut section. ठीक है. बुझेला? Okay. Now, gizzard helps in grinding the food. It has an outer layer of thick circular muscles and the thick inner cuticle forming 6 chitinous plates. 6 chitinous plates. 6 chitinous plates अच्छी, because of which, ठीक है, there is the grinding action of the food. ठीक है. Then फोरगट के बाद नेक्स्ट क्या आती है ना? मिडगट आती है. मिडगट इज व्हाट? मेजेंटेरॉन. मेजेंटेरॉन. ठीक है. ये आपकी बीच में जो आती है दैट इज योर मेजेंटेरॉन. मींस after the hepatic CK, that section which you see is the mesenteron or midgut. ठीक. Okay. Now it is not lined by any cuticle. केवल फोरगट केस रही क्यूटिकल अच्छी. हाइंड गट के केस में या इन दी सॉरी मिड गट के टर्म्स में आपको कोई भी क्यूटिकल नहीं मिलता. इट इज नॉट लाइन बाय क्यूटिकल. 6 to 8 tubules, that is hepatic or gastric CK, are seen at the junction of foregut and midgut. Hepatic, gastric CK, fine, are seen at the junction of the foregut and the midgut. ठीक है जी.
secrete the digestive juices जोड़ा है तो हमको कहली that is ऊपर में after the crop is done hepatic cica is there ठीक है crop के बाद gizzard के बाद hepatic cica is there तो वो hepatic cica ही digestive juice से secrete होता है now next at the junction of the midgut and the hindgut there are 100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubules. Malpighian tubules का basic functioning कौन हो? Excretion and osmoregulation. Osmoregulation. ठीक है? तो किसका काम है? Malpighian tubules का. Yes. Now. उसके बाद देखते हैं हाइंडगट पे आ जाओ लास्ट पार्ट टर्मिनल पार्ट है ब्रोडर देन द मिडगट एंड लाइंड इंटरनली बाय क्यूटिकल ठीक है इट इज ब्रोडर देन मिडगट एंड लाइंड इंटरनली बाय अ क्यूटिकल ठीक है हाइंडगट इंक्लूड्स इलियम कोलॉन एंड रेक्टम हाइंडगट रे कौन रहिला इलियम कोलॉन एंड रेक्टम ठीक है रेक्टम ओपन्स थ्रू the anus ठीक है rectum opens out of through the anus ठीक है fine उसके बाद देखिए circulatory system तो digestive देख लो foregut midgut hindgut they are the sections of the alimentary canal ठीक है जी foregut नो आपकी what we can say foregut जो है that elongates up to the hepatic cica then the mesenteron or the midgut and finally the hindgut ठीक है circulatory system में देखो blood vascular systems are open type why because the blood directly goes into the system ठीक है without any ठीक है proper form of channels etc still they are a very efficient mechanism of blood vascular system और इसमें है क्या देखो since it is open circulatory तो मैंने open close circulatory तो जानी थी वो ऑलरेडी भी पढ़े हो आप तो ओपन का अर्थ होता है when the organs or structures are combined the organs or structures are combined such that the organs lie within a capsular cover ठीक है fine so therefore when we say open they don't have any proper channels like blood vessels arteries veins एगुड़िक नहीं तो सेमानकर openly movement करियो from one place to another and contents will be diffusing तो in that scenario आपकी जो body various structures है आपकी जो various structures है उनमें अगर आप देखेंगे तो those are sinuses तो sinuses गुड़िक ये जो blood रे बुड़ी की थांती and various parts को जाई थांती ठीक अछि तो सेथि पाई air etc जो एमाने breathe करंती whatever airs they inspire they also directly reach the tissues without having any kind of transport काहे कि inside the body you have a fluid known as the body fluid but tissue fluid it is known as the hemolymph ठीक है hemolymph and the cavity or sinuses collectively are termed hemocoel तो cavity हो गई hemocoel ठीक है and the fluid is known as hemolymph बुझेला जेमती आमर blood थाए सेमती तांकर in case of cockroach you don't have a proper form of blood
तो तांको केस रे देयर इज व्हाइट और येलोइश कलर्ड फ्लूइड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड present in the whole body that is similar to the blood in our body, that is known as the hemolymph. अरे बुझिला, तो hemolymph उनका ब्लड है, बट वो ब्लड आपके जैसा लाल नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज it is not having any red pigments. आमो केस रे हीमोग्लोबिन अच्छी, that's why it is reddish in color. इनके केस में नहीं है तो ये लाल नहीं है भाई, बुझिएला. सो हीमोलिम्फ ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू रिमेंबर दिस. हीमोलिम्फ कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स, कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स, ये आपकी हीमोलिम्फ है. क्लियर? ओके. तो हीमोसील याद रहेगा, हीमोसील याद रहेगा. हीमोसील के अंदर क्या है? हीमोलिम्फ है, याद रहेगा. हीमोलिम्फ क्या, नो, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? यस, इट इज बेसिकली द प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स. ठीक है, ये हीमोसाइट्स क्या है भाई? आपकी लिम्फोसाइट्स की तरह सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स की तरह सेल्स होते हैं. ठीक है, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में दे हीमोलिम्फ हो गया, हीमोसील हो गया. अब जब बॉडी फ्लूइड है तो उसको आप पंप भी करोगे. when the body fluid is there, it has to be pumped also. Yes, to propagate from one part of the body to the other part, it has to be pumped. Now that pumping is basically carried out by a heart. That pumping is carried out by a heart. The heart in them is 13 chambered. याद रखो, very important. हमारी 4 ही चेंबर है भाई, 2 ऊपर 2 नीचे. We have a 4-chambered heart, 2 upper chambers, 2 lower chambers. Upper chambers known as auricles, lower chambers known as ventricles. But इनके केस में there are 13 chambers. ठीक है, अब इनकी हार्ट है कैसी? ये इनकी हार्ट है न्यूरोजेनिक. न्यूरोजेनिक means it is directly under the control of the brain. The brain or the CNS controls and regulates the heart. Hence, it is neurogenic. The stimulus which is required for the beating or the functioning of the heart is given by the CNS. Hence, neurogenic. तापरे shape हिसाब रे कहले, it is a tubular heart. Tubular heart. क्यों? देखो ध्यान से, अगर आप सही से देखोगे स्ट्रक्चर तो आपको दिखेगा इसकी जो हार्ट है वो ट्यूब्स जैसी है. दे आर लाइक ट्यूब्स. इस प्रकार की ट्यूब्स है, इस प्रकार की ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स है. ठीक है, हेंस ट्यूबुलर हार्ट. सो न्यूरोजेनिक हार्ट है, ट्यूबुलर हार्ट है एंड 13 चेम्बर्ड है. सिंपल याद रखिएगा. ओके, इस डायग्राम को मार्क कीजिए. ये तो हार्ट हो गई. ये जो मसल्स है जो इनको खींचते हैं, दे आर एलरी मसल्स. दे आर नोन एज एलरी मसल्स. ठीक है, फाइन. अच्छा, बिटवीन द टू एक पर्टिकुलर चेंबर से दूसरी चेंबर के बीच में, एक चेंबर से दूसरी चेंबर के बीच में ये there are holes or pores that help in the movement of the hemolymph. Those are known as ostia. It has funnel shaped chambers with ostia on either side. मतलब ऊपर में यहाँ पे एक होल होगा, यहाँ पे नीचे एक होल होगा. सो कैसा रहेगा शेप इसका? देखो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा. ठीक है, ऐसा. तो यहां से हीमोलिम्फ घुसेगा, यहां से निकल के दूसरे चेंबर में जाएगा. सो दीज 2 स्ट्रक्चर्स विच यू सी हियर, ये जो 2 स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, इनको हमने क्या नाम दिया? ऑस्टिया. ओके, द ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर्स हार्ट थ्रू ऑस्टिया and is pumped anteriorly to sinuses. यहाँ पे याद रखिएगा टर्म anteriorly. मतलब ब्लड की मूवमेंट कैसी होती है रे बच्चा? ब्लड की मूवमेंट कैसी होती है रे बच्चा? इस वे होती है, empty. The direction is like this. ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ. The pumping of the blood is basically anteriorly. Fine. And then once it is pumped, फिर again वापस sinuses में आ जाता है. Is that clear people? हो गया, समझ में आ गया? चलो,
यहीं तक रखो, ब्रेक ले लो, ब्रेक पे आने के बाद देन विल कंटिन्यू विद दिस कॉकरोच एंड देन स्टार्ट विद द फ्रॉग. ठीक है, ठीक है. टेक अ ब्रेक एंड क्विक.
Okay, people, welcome back. Let's begin again. So we had seen till the circulatory system. The next is the respiratory system. Now, as you can see, respiratory system है देखो रे बच्चा, come back quickly. ठीक है, अरे ब्रेक दिया था, सोने के लिए नहीं बोला था, है ब्रेक में पूरा पूरा ब्रेक कर लिया, सही है। कौन जे कहो रे, है जल्दी आओ, come back quickly. Okay, it consists of a network of trachea and spiracles. तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर यदि देखिए हमें कॉकरोचेस करो तो उनमें होता क्या है, दे हैव ओपनिंग्स इन देयर बॉडी, स्मॉल ओपनिंग्स और होल्स इन देयर बॉडी। ये आपकी होल्स है, ये दीज आर होल्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइरकल्स, दे आर कॉल्ड स्पाइरकल्स, ठीक है। एंड द नेटवर्क ऑफ ट्यूब, द नेटवर्क ऑफ ट्यूब present in them is referred to as the trachea, ठीक है। The spiracles are openings and the network of tubes that carry the air gases, oxygen into the body and carbon dioxide outside, ठीक है, they are referred to as trachea. Now यही जिन्स है इन spiracle and trachea system को हमने मैग्नीफाई किया। देखो spiracles, this is the opening and ये आपकी tubular structure है, this is the trachea, ठीक। Now as the air fuses inside, it is dispersed into various channels, ठीक है। देखो ध्यान से, ए बाटे air पसला, it propagates this direction, then directly goes into the tissues, ठीक है, directly goes into the tissues. Therefore it is there, there is no requirement of any kind of respiratory pigment. आमो केस रे कौन होता, we will respire, take in oxygen, that oxygen will go into the blood, will be transported via blood to the different parts of the body. एटी कौन होची, here there is no requirement of any such kind of thing. Directly air from the atmosphere will reach the tissues through a network of channels or tubes known as trachea. So आपका respiratory system कौन है, spiracles and trachea, okay। तो जेमती आमर trachea अछि, bronchi अछि, bronchioles अछि, सेमती आंकर कौन अछि, trachea अछि, tracheoles अछि, ठीक अछि, fine, okay। Then तो trachea and spiracles है गला, fine। यहाँ पे टोटल केतोटी स्पाइरकल्स थी ना, 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है, ऑन ईच साइड, ठीक है। The thin branches of tracheal tubes are called tracheoles, carry oxygen from the air to all parts and bring the carbon dioxide from the various parts of the body to the outside, ठीक है। The opening of the spiracles is controlled by sphincters. Sphincters are basically muscles, ठीक है, regulated by same chitin fibers, ठीक है। Gas exchange takes place at the tracheoles by diffusion. तो ए जाके पहुंचिबो, the oxygen will reach this region and from here it will diffuse into the body tissues, ठीक अछि। Or is that clear? Okay. Then respiratory is over, come to the excretory part. Already I told you that the excretory system or excretory structure of the cockroaches is Malpighian tubules. Yeah. Fine. They are uricotelic. Now uricotelic mane kono? They excrete uric acid. जेहेतु तांकर बॉडी रु सेमाने एक यूरिक एसिड बाहर करथांदी, so they are known as uricotelic. आमे कोन, we are ureotelic.
ମାଛ ମାନେ କଣ ammonotelic or ureotelic ଠିକ ଅଛି so ଅଲଗା ଅଲଗା organisms are of different excretory products तो आंकर excretory product ही कौन हैला ना uric acid excretory structure कौन हैला ना Malpighian tubules okay fine so therefore if you combine these two then the excretory system in case of cockroaches comprises of uric acid along with it Malpighian tubules ठीक है each tubule is lined by glandular and ciliated cells ठीक है काहे की in order to secrete and absorb ठीक they absorb the nitrogenous waste and convert them into uric acid ସେଥିପାଇଁ ନାଟି ଆଙ୍କର uricotelic ठीक है fine uricotelic माने those organisms that excrete uric acid are termed uricotelic ठीक है and ये कहां से निकलेगा जो जगह रे तुम्हारा Malpighian tubules थिबे Malpighian tubules है कहां पे they are located where in the hindgut ठीक है so fat body nephrocytes uricose glands ये समस्ते मध्य excretion रे साहाय्य करतांती besides Malpighian tubules so Malpighian tubules are not the only structures that help in excretion रे these structures are also very helpful ठीक है okay then come to the nervous system now nervous system implies the connection of all the nerve fibers etc jaha dwara they communicate they send signals they respond to stimuli etc fine so basically ammo case the brain is there nerves are there cranial nerves spinal nerves sensory afferent or motor efferent all these are nervous system so nervous system the basic components kauna sense organs that is the receptors then the central processing unit and the communicating channels that is the nerves तीनोटी जिनस मिसी की nervous system theory है now look at it anchor nervous system में कौन वाला as you can see in this figure here these are the nerve channels in between मझिरे मझे देखो there is a collection of nerves ठीक है जो मानकर तमे nervous system or neurons पढ़िथिबो structural organization रे so there will you must have seen nervous tissue or neural tissue रे देखिबो cytons are there axons are there तो सेही cytons मानकर जेतले गोटे ग्रुप रही गला गोटे जगह रे उसको हम लोग क्या बोलते हैं गैंग्लियन बोलते हैं they are known as ganglion okay they are referred to as ganglion ठीक तो आंकर बहुत गुड़ी को सेमती गैंग्लियन अच्छी इनको हम लोग ने ब्रॉडली किस में कैटेगराइज दिया कैटेगराइज्ड एज thoracic ganglion ठीक है सी सुप्रा इसोफेजियल सब इसोफेजियल एब्डोमिनल ठीक है तो ये बेसिकली आपकी गैंग्लिया है okay so these act as mini brains out of which the supraesophageal is the main structure hence it is referred to as the brain or functions as the brain of a cockroach ठीक है supraesophageal ganglion ठीक है esophageal का इनको आगला because it is located around the esophagus hence known as the supraesophageal ठीक है हो गुटे esophageal रो one side रे रहिला in the dorsal and other is towards the ventral so supra and subesophageal को आगला clear okay then it consists of segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives on the ventral side ठीक है तो आमर normally जो nerves गुडी को अच्छन से माने कोड थांती dorsal side रे थांती काहेकि because spinal cord is lying on the dorsal side एमानंकर कोड था because they are invertebrates anchor they are located on the ventral side this is very important
Remember this very important difference between the nervous system of invertebrates and vertebrates. Oh, 3 ganglia lie in the thorax and 6 ganglia lie in the abdomen. 3 ganglia thoracic region रे, 6 ganglia abdominal region रे. Very important. Remember this. यहाँ पे बहुत सारे facts मिलेंगे आपको बस. You'll have to remember the facts. There's nothing, no logic in this. Only facts, because you are simply studying the specimen. Specimen में कौन अच्छी उसी को ही आप जान रहे हो, समझ रहे हो and याद रखोगे. So you'll only have to look into the facts. तो जहां भी डेटा बा पॉइंट्स अच्छी ताको मन रखो. Okay, the head holds only a bit of the nervous system, that is supraesophageal ba subesophageal. ठीक है. So if the head is cut off in cockroach, it will still live for 1 week. काहेंकि आंको बॉडी रे आउरी अलगा गैंग्लियन गुड़िक अच्छी. thorax रे 3 गैंग्लिया, abdomen रे 6 गैंग्लिया. So brain of the cockroach जोटा हमें कहूचे सेटा बहुत छोटो गैंग्लिया टी. तो जदि मुंडो कटि भी गला, still then बाकी गैंग्लिया तो अच्छी. So it will be functioning for some time. ठीक अछि. So therefore even after the head is decapitated, the cockroach is still alive. ठीक है, and remains alive for more than 7 days or even a week or 10 days. ठीक है. The supraesophageal ganglion, that is the brain, supplies nerves to antennae and compound eyes. ठीक है. So head region रो total control कहाँ पाखे रे ना supraesophageal ganglion पाखे रे. ये supply करता है to the different parts of the head. ठीक है. Now, in case of the cockroaches, what are the various sense organs? Let's see. Sense organs bhitare, the primary sense organs which you'll see here are antennae, eyes, maxillary pads, labial pads, anal cerci. ये सब आपकी, there are various structures involved in sense organs. Sense organs: antennae, eyes, maxillary pads, labial pads, anal cerci, etc. Antennae, eyes, maxillary pads, labial pads, anal cerci, etc. They're all sense organs. ठीक है. Now sensory receptors यदि हमें कहबा, then the antennae monitor the environment. Antennae monitor the environment. Okay, means they sense the direction, pressure, wind conditions, wind directions, air रे जदि कोनोसी particulates अछंती ताको जानी पारंती, vibrations feel करी पारंती. All these are sensory functions of the antennae. Each compound eye consists of approximately 2000 hexagonal ommatidia. You can see this. They are the ommatidia. जोटा तुमको already कहइथिली, compound vision रे साहाय्य करता है. Each unit is known as ommatidia. They are basically hexagonal in structure. So more than 2000 hexagonal ommatidia are present in each eye of the cockroach. Okay. Using these, a cockroach can receive several images of an object. This is called mosaic vision. Kai pieces रे रहिबो, से माने part करी जिनसे उडी को देखिबे. So that's why mosaic vision दिखेगा. ठीक है. It has more sensitivity but less resolution. ठीक है. Being common during night, hence called nocturnal. काहे की रात्रि बेला जेहेतु माने एक्टिव थांती, से माने लाइट पोते बहुत सेंसिटिव थांती. They can detect कि लाइट अच्छी कि लाइट नहीं. किंतु तांकर रेजोल्यूशन बहुत कम. काहे की because of the compound vision. So आमे जेमती क्लैरिटी सहित देखि पारुचे कहि पारुचे जिंसटी कोन, they will not be able to determine what exactly the object is, but they can simply detect whether there is light or not and will be attracted towards the light. That is why it is more sensitive to light but does not have a clarity in the vision. ठीक है, बुझेला? Okay, so simply कहया गले more sensitive, less resolution. Clear है? Assertion reasoning questions गुड़ी करे बहुत समय question पढ़ी था. ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको. More sensitivity, less resolution. ठीक है. Then come to the reproductive system. Male reproductive system ध्यान से देखिए. What does it comprise of? As you can see here clearly,
there are certain structures involved. क्या क्या structures involved है बच्चा देखो. These are the testes. ये दोनों तरफ क्या है, ये testes हैं, as you can see in the figure. Right? Okay. Testes pore, there are structures that we call seminal vesicles. यहाँ पे आपकी seminal vesicles है, ठीक है. Now there are glands in the reproductive system like phallic glands, mushroom glands, ठीक है. Then here when you see, these are external genitalia. External genitalia कौन आसी हो, गोनापोपोर आसी जी, वो anal circi, anal style आ जाएगा, ठीक है. Titillatus आ जाएगा, pseudopenis आ जाएगा, phallomeres आ जाएंगे. These are the external genitalia. So like in case of human body, you'll have the testis as the primary reproductive structure. Tapare, there will be the accessory ducts. Then you'll have the glands, and lastly the external genitalia by copulatory organ. Same anchor madhya, a pair of testes, seminal vesicles, accessory glands, and external genitalia. ठीक अछि? Okay. Now see this. These are very, very important. Most of the times when the question comes in the examination, the questions are related to the male reproductive system or the female reproductive system. So basically, please pay attention to it. This is quite important. Now, here you do not have to, understand much. The understanding is not actually required because you're not understanding the physiology. Here, basically, we are simply interested in facts. Okay. So, facts record, what are the various structures present? What is the function of those structures? What is the trajectory or flow of these? So, therefore, we'll not have to remember, understand things into depth. Because since this chapter is not there or removed from your NCERT syllabus, but only present in the NEET, and that too, it is mentioned in general features, morphology, and anatomy. So physiology basically amar nahi. Okay? So we are not focusing on that. We're only focusing on the basics. Okay? So facts are there. We'll have to remember them. And only thing what we can do is we can categorize the important facts from the unimportant facts. Okay? Now, starting with it, the first thing is testes. Okay? Testes. Now, testis location important to mark karo. 4th to 6th abdominal segments. जो abdominal segments हमें देखे थे 1 to 10 पर्यंत उसी के बारे में बोल रहा है. So location of testis कौन हो? 4th to 6th segment. 4th से 6th segment. From 4th to 6th segment. ए भीतरे ही तमरा testes are located. Clear? Okay. Then each testis is इनकी फ्लो कैसी होती है देखो. टेस्टिस थ्रू कौन बाहर ही the sperms निकलेंगे. Sperms will come out. Then they would enter where? Into the vas deferens. So testis through बाहर, this is number 1. Trajectory जो मैं कहूँगी. फिर आए vas deferens. Then seminal vesicles. And finally the ejaculatory duct. ठीक है. उसके बाद आपका lastly from the male gonophore it will be released outside into the female reproductive tract. ठीक है. Again देख लो testis हो गया, the site of production of spermatozoa by sperms. Then they migrate through the vas deferens, which is a duct. Then they reach the seminal vesicle that contains certain secretions that the human reproduction body the seminal vesicles, Cowper's glands, bulbourethral, ठीक है, prostate, इनके बारे में पढ़ोगे. So their basic purpose is production of seminal plasma. Etymology से बढ़िया. They produce lubricants, ठीक है, in the form of seminal plasma.
that is basically done by these. No, you do not have so many glands as in case of human beings. Kintu glands are present, they are helpful. So seminal vesicle is one of the primary glands in case of cockroaches. Seminal vesicle. Now after this, it reaches the ejaculate duct, from where it is ejaculated, and the opening through which it is ejaculated is known as gonopore. Sethipai, testis, vas deferens, seminal vesicles, ejaculated duct, and finally gonopore. ठीक है, ये ट्रैक याद रखिएगा, 1 2 3 4 5. ठीक, okay. Then seminal vesicles store the sperms. Sperms are glued together to form bundles called spermatophores. Very important. Inside the seminal vesicles, since they have secretions, so they would prepare the ejaculate. Ejaculation, they जो जिनसे बाहर था, ताको ejaculate हुआ जाए. The term ejaculate is used for those, for the substance that comes out in an ejaculation. Okay? So ejaculation is the process, and what is given out is known as the ejaculate. So ejaculate ki prepare kariwe. So sperms etc. would be aggravated. Okay? The sperm aggregate will be taken. They would be put in a kind of waxy or semi-liquid kind of gluey substance in which they will be bound together, and then they could be ejaculated out. Okay? So seminal vesicles basically store the sperms temporarily. Then they are processed to form spermatophores. They are discharged during copulation. So ejaculation जितना हमें कहूँचे, but copulation हमें coitus जितना हमें कहूँचे, उसमें ये चीजें बाहर निकलती है. बुझेला? Okay. Now, fine. Okay. Then comes the accessory glands. In accessory glands, they include a mushroom gland. Okay. This is the mushroom gland. As you can see, the shape or the form of this particular gland is a mushroom. Since it is shaped as a mushroom, we refer to it as a mushroom gland. ठीक है जी, इसमें mushroom का कोई लेना देना नहीं है, no fungus involved. ठीक है. Since the shape is in such a manner, it appears like a mushroom, we refer to it as mushroom gland. ठीक है. तो जेमती सेठी तो मैं जान लो that it is located in the 4th to 6th. 4th through 6th भीतर है आपका ये testis located है. Same thing. जैसे 4 से 6 के बीच में आपकी टेस्टिस in case of cockroaches is located, वैसे ही आपकी 6th to 7th segment में you will have the location of the mushroom glands. ठीक है? Fine. And after that you have another set of structure known as the phallic gland, which is present where on the other side of the mushroom gland. So actually this which you see here, ये आपकी phallic gland है. But phallic gland is actually not visible in this structure. In order to show us, we have, the diagram represents it here, but actually it is not visible. It is located behind the mushroom gland. Okay? So in order to observe the phallic gland, you'll have to remove the mushroom gland. So when we are studying it in the form of a 2D diagram, you cannot easily remove it. So how would you depict it? Simply placing it somewhere where we can observe this. ठीक है जी. So सेतिबा it रखा है जी. So mark it out. Phallic gland is located towards the anterior section and behind on the dorsal side of this particular mushroom gland. ठीक है? Okay. The secretions nourish the sperms. As I said, seminal plasma ର function ଅଛି lubrication and nourishment. ସେଇ କାମଟି ଏଠି a glandular secretion ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି. Seminal vesicles, phallic glands and the mushroom glands. Clear? Okay. External genitalia में कौन included है? In the external genitalia, as you can observe, you will have the male gonapophysis plus the phallomeus. ठीक है?
gonapophysis kaha kuha jaita hai? What are the gonapophysis? Now gonapophysis includes all these structures. The gonapophysis includes all these structures. ठीक है, उसमें how do you define it? It is the collection of all these structures present in the region surrounding the gonopore. Now, अगर आप gonopore देखेंगे, the gonopore is located here in the this structure. यहाँ पे आपकी gonopore निकलती है, ये देखो इस जगह पे आपकी gonopore आएगी. ठीक है, ता चारिकड़े जो जिनसटी अच्छी, all those structures present are referred to as the external genitalia by gonapophysis by phallomeus. ठीक है, देखो इधर, these are left phallomeus, एगुड़ा है left phallomeus, these are left phallomeus. Same thing, there are right phallomeus, ventral and dorsal phallomeus. ठीक हो जी, लेफ्ट phallomeus है, इस तरह राइट साइड में phallomeus है, प्लस we'll have dorsal and ventral classification. ठीक है, तो remember this. Along with it, you'll have the anal sulcus, the anal style, ठीक है, or the caudal style, pseudopenis, titillator organ. Now all these participate in the act of copulation by coitus. Various functions are there. For example, the titillator helps in placing the penis at the right position for delivery of the sperms. Okay, there are several structures. Now, since I said we are not going into the depth of the physiological mechanism, so we are only looking at the structures. Fine. So those structures which I have mentioned, please refer to them, remember them. Okay, do not need it to go into the depth of these things, since it is not actually there in terms of your syllabus. But NEET exam re syllabus re, it is there. Only basics. ठीक है. Fine. Male reproductive system for it. Next thing is the female reproductive system. Now, female reproductive system in case of cockroaches is quite simpler compared to that of males, because glands etc. nahi koya gole, only a single is present. ठीक है. Ovaries बहुत simple, adducts are very simple. There's no structures like titillator, pseudopenis, phallomeus etc. So it's very simple. Look at it. It consists of two large ovaries. As you can see, these are the ovaries which are present. ये आपकी जो yellow दिख रही हैं, these are the ovaries. ठीक है, two large ovaries. ठीक है. Then from here you'll find the oviducts. ठीक है. Then opening of it is referred to as the vagina. ठीक है. Storage of sperms occurs here, that is spermatheca. Then inside is ये जो दिख रहा है आपको, fine, ये आपकी in total forms the genital pouch. It comprises of two things. One is the genital chamber, ठीक है. The other is the vestibulum or the gonapophysis. ठीक है. Genital chamber. The genital pouch comprises of the genital chamber and the vestibulum along with the gonapophysis. Now, gonapophysis is common to both males and females, but the components are different. External genitalia ko gonapophysis kuha gola. Why? Because it is the structure or the collection of structures that are present surrounding the gonapophore. Clear? So, gonapophysis in males also present, females also present, but they vary in their content by structures. Okay, बुझेला. तो क्या parts हो गए? Two large ovaries are there, oviduct is present, then the vagina is present, then you'll have the spermatheca. That will lead to genital pouch. Genital pouch which is a genital chamber ଅଛି.
vestibulum अच्छी and the gonaphosis अच्छी. Fine. इनके दो साइड में as you can observe दुईटी set of glands अच्छी. ये only glands है इनमें और कोई glands नहीं है. ठीक है. These are the only glands present here. We call them the collateral glands. Collateral glands. Cetium we have seen seminal vesicles are there, mushroom glands are there. ठीक है. यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे only one set of glands है, that is okay, collateral glands. ठीक है. Okay. Moving forward, look into it. The female reproductive system, as you see, the ovaries lie laterally. Koti, same again. The male case, 4th through 6th, में 6th through 7th, that is position of segments. यहाँ पे भी इन segments का बहुत important role है. ध्यान से देखो. Ovaries lie laterally in the 2nd to 6th abdominal segments. मतलब 8 नहीं कि 8 पर्यंत तो ये 2nd से लेके 6th तक है. Segments. ठीक है जी. So the ovaries are located between the 2nd to the 6th abdominal segment. Okay. Each ovary is formed of 8 ovarian tubules. तो आप देख रहे हो ये 4 ऐसे, तो each is an ovarian tubule. Each is an ovarian tubule. तो गोटे ओवरी रे 8 ovarian tubules थांती. Very important. Remember. ठीक है. In one particular ovary, there are 8 ovarian tubules, also known as ovarioles. आंको ovarioles भी कहा जाता है. तो गोटे ओवरी रे नंबर 8 ovarioles आंती. So basically, an ovary comprises of 8 ovarioles. ठीक है. Understood? Fine. Then the oviducts of each ovary unite into a single. ये oviduct, ये oviduct. एटियासी मिसिगल है. Understood? Fine. Into a single median oviduct. जो oviduct मानकर मिसिबारु कौन formula vagina forma. ठीक है. In our case, in humans, if you remember, the meeting of the fallopian tubes or oviduct, okay, takes place where? In the uterus. ठीक है जी. Uterus for it, then it will come the vagina. काहेंगी? Because our case it is internal development. That is the main thing. Internal development होता है. But in their case it is external development. So they will lay the eggs and the development occurs outside. So there's no requirement of any kind of chamber present inside the body to develop the young ones. ठीक है? Okay. Now, this particular median oviduct of vagina opens into where? As I've already said, the genital pouch. ठीक है? Fine. The genital pouch, pratham part is the genital chamber. Clear? Genital chamber के बाद, you will have the gonapophysis structures. We'll come to that now. Look at it. A pair of spermatheca is present where? In the 6th segment. So ये आपकी 2nd से 6th segment में था. This was present in the 2nd to 6th segment. 2nd to 6th segment. At this 6th segment, you'll have spermatheca. कौन सी? ये है. This is the spermatheca. Now spermatheca रो कामो कौन है ठीक? To store the sperms temporarily prior to fertilization. Fertilization होबा पूर्वरु किसी समय पाई इसको store करना है. So that is what is spermatheca present for. ठीक है. Important spermatheca कौन सी chamber में है भाई? 6 chamber में है. Remember this. Okay. उसके बाद देखो. Sperms are transferred through spermatophores. We know that already. The fertilized eggs are encased oothecae. यहाँ पे बहुत important question बहुत बार पूछा गया है. 8 मन रखो. The fertilized eggs that are covered, these which are covered. देखिए तो मैं सपोज घर दी बहुत दिन बंद रहेगा. आप मान लो कहीं बाहर गए हैं किसी इंपॉर्टेंट काम में, and when you come back तमे देखियो घर चारिकड़े ए छोटो छोटो कला कला पड़िथियो के ब्राउन ब्राउन कलर पड़िथियो.
they are nothing but the fertilized eggs of the cockroaches. We call them what? Na ootheke. ठीक है? Inside which the young embryo will be developing. ठीक है? Ootheke is dark reddish to blackish brown capsule comprising it is 8 millimeter long approximately. Fine. Females lay 9 to 10 ootheke. Total 9 to 10 ootheke lay करतांदी, each containing 14 to 16 eggs. समझ में आया? ootheke गुट्टे ootheke रे 14 से 16 fertilized eggs रहते हैं and थोरक रे they lay 9 to 10. ठीक है? तो 9 से 10 ootheke एक बार में डिलीवर होते हैं and each ootheke consists of 14 to 16 eggs. ठीक? Now, when there will be development, yes, you can see here. तो ये basically आपकी ootheke है. Inside the ootheke यहाँ पे आप देख सकते हो there are fertilized eggs present from which these things will develop. ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं. Oh. Now there are some important terms here. Please mark it out. ध्यान से देखो. Development of the Periplaneta americana is porometabolous. Very important. What kind of development it is? It is porometabolous. Development through the nymphal stage. जेहेतु एमानकर nymph form होता है and the nymph is closely resembling the adult. Nymph is closely resembling the adults. किछिटा size रे differences and structures रे differences आसीबो. But अगर आप ध्यान से mark करोगे तो देखोगे कि nymph also resembles the adults. Similarity is there. Therefore, this kind of development is known as porometabolous. ठीक है? Nymphs look like adults. They molt 13 times to reach the adult form. So therefore, the nymph shall undergo 13 moltings in order to metamorphosize from its nymph stage to the adult stage. Age of process टी हेता एटी हमें पढ़िछो हमर एनिमल किंगडम रे मध्य कोन पढ़िछो मेटामॉर्फोसिस पढ़िछो. यस, मेटामॉर्फोसिस टी कोन ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ठीक है? एंड डेवलपमेंट इज ऑकरिंग वेयर? आउटसाइड द बॉडी. ठीक है? एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, इनडायरेक्टली हो रही है. ठीक है जी? एंड द प्रोसेस इज नोन एज मोल्टिंग. ठीक है? एंड इट रिजल्ट्स इन द मेटामॉर्फोसिस. ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यंग इनटू द एडल्ट फॉर्म is termed metamorphosis. ठीक है? The next to last nymphal stage has wing pads. मतलब next to last means 13th pore you'll have the cockroaches with fully functional wings. So 14th stage वेळको they will be having, after the 13 cycles are over, after the 13 cycles, 13 moltings are done, ठीक है? Then they will have the wings developed. ठीक है? Only adult cockroaches have wings. The nymphs do not have wings. Even in adult cockroaches, okay, unless they have completed the 13 moltings, the wings do not become functional. Wings manakar function haba pai, they will have to undergo 13 moltings. ठीक है? Fine. तो ये हो गई बेसिकली आपकी कॉकरोच. ठीक है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दे कैन बी वेरी हार्मफुल. दे स्प्रेड अ लॉट ऑफ डिजीजेस. देखो, पेस्ट है बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड. ठीक है? एंड कॉन्टामिनेटेड विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा. दे आल्सो ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, डायरिया. ठीक है? Even in certain cases bubonic plague मध्य करंती. ठीक है? Yersinia pestis transfer करते हैं. So therefore they are economically harmful, but
they are also very, very good scavengers. They are very, very good scavengers. The ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କର କି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି. They are household pets, correct, but they are very important scavengers, and scavengers are also very important for maintaining the sanitation of the ecosystem. So suppose there are dead and decaying organisms or matter, food present in the surrounding. Okay? So these cockroaches will feed upon them and slowly break them away. Therefore, they also help in keeping the surrounding clean. And one thing you remember, they are one of the oldest of the organisms present on Earth. Why? Because they date back to the Triassic and Jurassic period. Okay. Just imagine the great dinosaurs became extinct by the end of the Cretaceous, but cockroaches, any tiny creatures, hardly 6 to 7 centimeters maximum length. They have still survived from the Triassic period till date. So therefore, they are one of the greatest survivors of any kind of hazard. Even nuclear holocaust के मध्य, these cockroaches managed to survive. Okay, so that's why they are not completely harmful, but they may result in the certain conditions that might be harmful to us. ठीक है, तो इसके साथ ही हो गया आपका कॉकरोच खत्म. So next we shall now immediately move into the frog. ठीक है, cockroach is done. Cockroach is done. Next we shall move into the frogs. Male and female cockroach or abdomen madhyare difference kon? Okay. See, abdomen does not have much of a difference in case of males and females. But आपको already starting में I had shown the difference between the male and female cockroaches abdomens. क्या थे वो? ठीक है. Those were the width, माने तो क्या हमें the breadth of the width. ठीक है, चौड़ा. The females have a wider form of abdomen, whereas in case of males, the abdomen is narrow. One. Then, in case of the males, the reproductive structures lie in the 4th to 6th segment. Okay, 4th to 6th segment. But in case of females, the 2nd to 6th segment. So, इसलिए those are important. Plus, lastly, caudal style व anal style जो हमें कोच है, वो आपकी males में present होती है, females में नहीं होती. So these are certain differences between the male and female abdomen of cockroach. ठीक है, understood, done. तो ये हो गई आपकी cockroach की कहानी खत्म. Fine. Now let us move into the frogs. Okay, बच्चा. Now please pay attention. Frogs is there both in your syllabus for board exams as well as in the NEET examination. Sati bhai, please pay attention properly. ठीक है? Okay. Oh. Now, Rana Tigrina, this is the common Indian frog which you see. Fine. ये आपकी common Indian frog है. Rana Tigrina and Bufo Melanocystus, these are basically two frogs here. ठीक है? Okay. Now, please look at the classification part. Please look at the classification part of the frogs. Mark it out. Now, phylum Chordata, जितने हमें classify करूँ, then we got the subphylum Urochordata, ठीक है? Subphylum Cephaldochordata and the Vertebrata, ठीक है? Urochordata,
cephalochordata and vertebrata. ठीक है? Total 3 categories have been formed in the phylum Chordata. Now, in case of Urochordata, the sea squirt or the tunicates जिसको आप बोलते हैं, so they are present like the herdmania. In case of cephalochordata, you have the amphioxus, etc., lancelets, वगैरह. And in the vertebrata, we have a further details. Now, amoro camoro ginsoida, in case of the frog, is that frog basically lies in the vertebrata. Basically lies in the vertebrata. तो vertebrata में आपकी further 2 categories बनती है. One, agnatha, जो मानो करो jaws नहीं. So they are basically jawless vertebrates. And gnathostomata, gnathostomata, they have jaws. Okay? So jawless agnatha, with jaws gnathostomata. Okay? Now come to this jawless vertebrates, just basics. कि हमारा frog comes in the jawed vertebrates. Just एक बार देख लो. तो हमारा jawless vertebrates मानो भीतर है. You'll have the ostracodermy, which are already extinct, and then placodermy and cyclostomata. तांको भीतरू, see, placodermy and ostracodermy ये दुईटी extinct है ऑलरेडी, तो इसलिए इनकी क्लासिफिकेशन नहीं होती है. But the cyclostomata are present. Cyclostomata माने कौन हो? Circular mouth. The mouth is circular. Mouth is circular. Remember this. जेहेतु एमानक circular mouth अच्छी, तो इनको cyclostomata बोला गया. Petromyxin, myxin are examples. ठीक है? Hagfish जुटा में कोचा, lancelet and the hagfish वो इस कैटेगरी में आती है. हो. जब jawed vertebrates में आए, तो केमिजी क्लासिफिकेशन कॉल है हमें. एक सुपर क्लास बन गया पाइसेस, एक सुपर क्लास बन गया टेट्रापोड्स. काहे की पाइसेस मानन करो कौन अच्छी, ये अपोडा में आते हैं. अपोडा, अपोडा माने लिम्बलेस, लिम्बलेस. तो सुपर क्लास कैसे हो गया ये अपोडा? बिकॉज इट कंटेन्स लिम्बलेस ऑर्गेनिजम्स. जो मानो करो गोड़ो हाथों नहीं, वो है लिम्बलेस. इंस्टेड दे हैव फिन्स फॉर स्विमिंग. तो इनका अगर आप देखोगे तो इसमें आता है. ठीक है? Fine. Okay. Now, so basically, the superclass Pisces, they are coming under Apoda by limbless. Okay. Fine. Now, as I was mentioning, placodermy. Okay. So here, what you see, all fossils means they are already extinct. So we only have remnants, that is fossils present. So placodermy, ostracodermy, ये दोनों extinct हो गए. ठीक है? हो. Now, when it comes to the superclass Pisces, तो इनमें आपकी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं. One is the chondrichthyes and the other is ostrich-thighs. माने cartilaginous fishes and bony fishes. गया. Come to the superclass tetrapoda. Tetrapoda काहे को आगला? Because आंकरो चारों डिगोड़े होते. So they have basically 4 limbs present. Hence tetra. Podos माने legs, limbs. Hence tetrapoda. So tetrapoda ro prathama category is the class amphibia. Class amphibia. ठीक अछि. ए class amphibia रो गोटे member हला तमरो frog बा राना टिग्रिना बा बुफो मेलानोसिक्टस whatever. तो ये आपकी basic categorization है. So the frog comes under the class amphibia, where they show dual mode of life, both aquatic as well as terrestrial. बुझिला. तो हमारी क्लासिफिकेशन वही तक है. आगो को सिंस रेप्टिलिया, एव्स और मैमलिया हमको नहीं चाहिए. हमारा काम होता है एम्फीबिया कहाँ अंडर है आसूची एंड कैसे डिवीजन हो रही है वो देखना था. तो आउटर कोडा जस्ट रिव्यू कर दिया. कॉर्डाटा तीनटा भाग रे भांगी वाला. One is the urochordata, then cephalochordata and the vertebrata.
वर्टिब्राटा में दो आ गए, जॉलेस दैट इज अग्नाथा एंड जॉर्ड दैट इज नाथोस्टोमाटा। ठीक है, अब ये जॉलेस आपकी आती है, उसमें आपने ऑस्ट्राकोडर्मी एंड दी साइक्लोस्टोमाटा को ला दिया। ठीक है, तो सर्कुलर माउथ है विदाउट जॉज। बट यहाँ पे जब नाथोस्टोमाटा आया, तो in that we have put it into two categories. One is the apoda without any limbs, and the other is the tetrapoda, 4 limbs. अब जब हमारी जो amphibians category होती है, that is the class amphibia, that includes the frogs. Hence these are considered as tetrapods and vertebrates. ठीक है, now come to the next please बच्चा, जल्दी come quickly. So this is how the classification, the entire classification of the frogs that we see is there. तो kingdom animalia है, phylum chordata है, subphylum vertebrata है, section is Gnathostomata, superclass is Tetrapoda, class is Amphibia, order is Anura, family is Ranidae, genus is Rana, species is Tigrina. Author देखो, kingdom animalia है, phylum Chordata है, subphylum Vertebrata है, section Gnathostomata है, superclass Tetrapoda है, class Amphibia है, order Anura है, family Ranidae है, genus Rana है, and species is Tigrina. ठीक है, फाइन, ओके। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेम्बर दैट। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आप क्लासिफिकेशन याद नहीं रखेंगे तो होगा, नहीं होगा। क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक अच्छी, नाउ लुक एट द वेरियस जनरल फीचर्स। कहीं से फ्रॉग हो बा कॉकरोच हो, जेहेतु ये स्पेसिमेन मान करो केवल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ही अच्छी, तो हमको बस जनरल फीचर्स में जाना है। वी डू नॉट हैव टू गो इनटू द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ओके, ठीक है। ना फ्रॉग्स बेसिकली आर एम्फिबियंस, माने कौन हो, दे शो डुअल मोड ऑफ लाइफ। यस, सो दे कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ठीक है, लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, एंड मोस्टली ये फ्रॉग्स जो है दे सर्वाइव ओनली इन फ्रेश वाटर। यू वोंट फाइंड सॉल्ट वाटर फ्रॉग्स एनीवेयर। ठीक है, सो फ्रॉग्स नेचुरली ऑकर इन द फ्रेश वाटर रीजन्स, फाइन, and belong to the class Amphibia of phylum Chordata. The sample which we have taken or considered here is Rana tigrina, found in India. They do not have constant body temperature. काहेंकि? Because they are poikilotherms. दुईटी कैटेगरी था, गोटेला poikilotherms, मार्क करो इधर रे, गोटेला poikilotherms. These things were already taught in the animal kingdom classification part. ठीक है, poikilotherms, and the other is homeotherms, warm blooded. ठीक है, तो when they can adjust to their body's temperature to the external temperature, then we call it homeotherms. Suppose they are unable to do so, they are called poikilotherms. So poikilotherms basically are cold blooded and cannot regulate their body's temperature. ठीक है, then उसके बाद the special abilities of the frogs to change the color to hide from other predators is called mimicry. Mimicry means simply if they can copy the coloration or looks of another in order to protect themselves from any predator or to catch their prey, hunt the prey, then that particular type is referred to as mimicry. Okay? Then you may also know that the frogs are not seen during a peak summer or winter. Because they undergo a process called hibernation in case of winter. Hibernation in winter and
estivation in summer. Now, duty in se kauna estivation ho ba hibernation ho khadya and subidhar abhavre due to the deficiency of food, shelter, टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइन दी एस्टिवेशन इन केस ऑफ समर. विंटर में उसी चीज को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन. इतने हुए कौन? दे अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड डॉर्मेंसी. ठीक है, इनएक्टिव स्टेट रहिबे कौन प्रकार किसी काम करिवे नहीं, देन यू कॉल इट डॉर्मेंसी. ठीक है, ना उसके बाद देखो, इफ यू लुक एट दी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो स्किन कैसा है इसका? स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस. ठीक है, क्यों? म्यूकस इज एसेंशियल फॉर देम. म्यूकस इज एसेंशियल फॉर देम. जस्ट अ सेकंड पीपल. हेलो, ये का दूची राइट और रखो. ओके, जस्ट अ सेक पीपल. Extremely sorry, people. Some urgency at home. Okay, my daughter, she's not well, so whether she would go to the school or not, that was a permission. Anyways, okay, fine. ठीक है. So basically, if you look at the skin, as we just discussed, the skin is having a layer of mucus. Okay. Now this mucus, similar to that of no, in case of plants, you have a cuticle. So emanଙ୍କର skin ଉପରେ भी there is a presence of mucus, mucopolysaccharides. Now आंकर कामो कौन होला? This is basically a gelatinous substance. Gelatinous substance. Now a gelatinous substance रो role कौन? It retains moisture. It retains moisture. Now moisture कहीं दरकार? It helps in cutaneous respiration because the skin does not become dry. Dry here, there's a condition it may crack or it may desiccate. Actually, the right term is desiccate. So sukhi gale in the amaro winter season dekhitio skin ka jetole moisture lose kar jaye to chapped he jaye, broken he jaye, and it is not capable of remaining turgid. So turgidity maintain na hole surface area kami jibo, so diffusion area kami gale, this respiration rate will also become low. That is the basic reason why the skin remains moist because of the presence of mucus. Very important. Please do remember this. Because frogs are the ones that show three different kinds of respiration. One is this cutaneous. And cutaneous spiky, always the moist condition is required. Otherwise, they would not survive. Very important. Okay. The color of the dorsal side of the body, again, this point is valid and very important. This was asked in the current year, 2025 year NEET. ठीक है, इसी के ऊपर question आया था. And no, it was asked as which of the statements is correct
regarding a frog. This was the thing. 80 dorsal थिला, जो dorsal यहाँ पे है, इसको ventral बना दिया, and इस ventral को dorsal बना दिया, मतलब exchange कर दिला, and उसको पूछा था कि इनमें से कौन सा सही, कौन सा गलत है, whatever. तो सही थी भाई, remember this, fine. So dorsal side of the body is generally olive green. ठीक है, dorsal side ऊपर is olive green. ठीक है, with dark irregular spots. As you can see, इसमें dark irregular spots are present. ठीक है. Then on the ventral side, the skin is uniformly pale yellow. पेट के पास अगर आप देखोगे तो uniformly ventral side is pale yellow, straw color. ठीक है, fine. The frog never drinks water. Why? Because in its body, the ability to absorb moisture from the environment is very prominent. Same moist skin is required. Okay. Now, body of a frog is divisible into head and trunk. See, this part is the head region and this part is the trunk region. They do not have a post-anal tail. Do not have a post-anal tail. Very important. Normally, amphibians manakara post-anal tail rohe. Frogs do not have it. Kaiki metamorphosis bole, tangar to tadpole thila, tadpole or anjo thila. That the tail is lost during the metamorphosis. Okay? And ankara neck no thai. Neck is absent. Therefore, total body t divisible into the head and trunk. Okay? Okay. Now, neck and tail are absent in case of mature frogs. Fine. Understood? Above the mouth, a pair of nostrils is present. Ye jo dekh rahe ho aap, these are pair of nostrils. Okay? Which help in the pulmonary respiration. Pulmonary. ऊपर देखिए हमें cutaneous, ये है pulmonary respiration. ठीक है? Eyes are bulged. बाहर की तरफ निकली हुई है, bulged है. Covered by the nictitating membrane. Nictitating membrane कहाँ दरकार? It protects the eyes during while it is in water. ठीक है? It can see clearly inside water. On either side of the eyes, there is a membranous tympanum. Mark karo. This is known as a tympanum. External ear nahi. So therefore, this tympanum hai, that directly leads into the inner ears. Fine. So therefore, for hearing purposes, they have simply a membranous tympanum that represents the ear of a frog. Okay, no ear pinna is present. Okay, receives sound signals. The forelimbs and hind limbs help in swimming, walking, leaping, and burrowing. Now, many events are there. Dhyan do idhar. Help in swimming, walking, leaping, burrowing. What are the various kinds of movements that the frogs can display? Swimming kari paribe, walking kari paribe, leaping mane jump kari paribe, and burrowing mane kholi ki mati de gato vali kari ki ta bhitere posi paribe. So these are all the functions that a frog can do with the help of its limbs. Okay? The hind limbs end in 5 digits, whereas the forelimbs have 4 digits. Very important. Hind limbs have 5 digits, forelimbs have 4 digits. Hind limb is larger or bigger and more muscular, stronger. Okay? The hind limbs are larger and more muscular, okay? Whereas forelimbs are smaller, okay? Smaller and weaker. Now, hind limbs, therefore, suppose question machala, leaping paengi, ba jumping paengi, ba swimming paengi. Which of the limbs are important? Answer is hind limbs. Okay? Burrowing paengi, forelimbs. Okay, see. So forelimbs have 4 digits in it. Okay, fine. And in May, if you mark properly,
Suppose these are the limbs. Suppose these are the limbs, empty limbs. These you'll find here. A gudiko tomoro. They are webs. So they have webbed feet in. Huh? So this helps in their swimming purposes. Fine. So feet have web digits that help in swimming. 80. What a very important point is there. This is very, very important. The four limbs. Okay, ध्यान दो इधर. Four limbs have a developed form of a web-like structure that is referred to as a copulatory pad. Copulatory pad. Where by the help of this copulatory pad, they are capable of mating or copulation. ठीक है जी? Very important. ठीक है? Male frogs can be distinguished from the female frogs. ठीक है? In two ways mostly. One is the croaking sound made by them through the vocal sacs. And secondly, by the presence of this copulatory pad in their forelimbs. ठीक है? कहां पे located होता है? On the first digit of the forelimbs for clasping the female during copulation. ठीक है? Understood? Come to the next, please. Now, look at the various systems here. Now, as we already know when we have studied in the animal kingdom, that in case of these vertebrates like amphibians, fine, they have a complete form of digestive system. Complete form of digestive system. That is, the alimentary canal is complete. Mouth is the anterior opening. Anus is the posterior opening. ठीक है? देखो इधर. So when you talk of the alimentary canal, mark it out. The alimentary canal comprises of a mouth, anterior opening, opens into the buccal cavity, that leads into the esophagus, and through the pharynx, it reaches the stomach region. Okay. Secondly, you have the esophagus that has the resemblance to us. See, अगर आप ध्यान से देखोगे, you'll observe that the alimentary canal in case of frogs is more or less same as that of the humans. कोई ज़्यादा difference नहीं है. हाँ, only the orientation, shape or form might be different, but the same components are present. Same components या similar components are present. जैसे mouth हो गया. Mouth पर कौन आती है ना buccal cavity. Buccal cavity के बाद क्या आएगा? Yes, the gullet. Gullet के बाद क्या आएगा? Esophagus. ठीक है, तभी तरह pharynx वगैरह आएगा. Esophagus. तो esophagus का काम कौन है? Food को propagate करेगा from the mouth region to the stomach region. ठीक है. Then our third part is the stomach. Now stomach lies on the left side of the body cavity, made up of the anterior cardiac stomach and the posterior pyloric stomach. हमारा body, हमारा stomach जमती cardia, corpus, pylorus. ठीक है. कार्डिया रहता है, फंडस रहता है एंड पाइलोरस रहता है. 3 parts are there. इनके केस में फंडस नहीं है, बट कार्डिया एंड पाइलोरस इज देयर. वही है. देन आम बॉडी रे जेमती स्टमक भितर ऑक्सेंटिक सेल्स आर देयर, ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स आर देयर. दे सीक्रेट व्हाट? HCl. ठीक है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? पेप्सिनोजन. दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन. That get converted into pepsin in the presence of HCl and results in digestion of proteins. So proteolytic होता है. आम बॉडी में भी अच्छी, इधर भी है, सेम चीज है. ओ इंटेस्टाइन में आओ. इंटेस्टाइन बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे, longest part of the alimentary canal and is divided into duodenum, ileum and rectum. What is missing? ना jejunum is missing. duodenum है, ileum है, जेजुनम होना चाहिए था. ठीक है. उसके बाद सिकम, कोलोन, रेक्टम. यहाँ पे क्या हो गया? डिओडेनम हो गया, इलियम हो गया, सीधा रेक्टम आ गया. That is the large intestine part. You do not have the division into jejunum,
cecum, colon, etc. But these three parts are also there in us. Duodenum achi, ileum achi, rectum madhya achi. Fine. तो बोलने का अर्थ ये है कि these parts which are there, इनमें भी होता है. It's not that it's completely different. Okay. Digestive glands में अगर आओगे तो क्या है? Liver is present. ठीक है. Secretion of the bile. ठीक है. Into the gallbladder. Pancreas है. जितनी को digestive juices वगैरह वो pancreas से secrete होती है. ठीक है. उसके बाद देखो अच्छा, if you look at the consumption or the food habits of a frog, so basically food क्या, what is the common food habits of a frog? The common food habits of a frog include insects, worms, mollusks. ठीक है. Food is captured by the bilobed tongue. ठीक है. The tongue of the frog is bilobed in nature. Bilobed का मतलब क्या होता है? It's not bifurcated, bilobed है. The tongue is bilobed like this. This is known as bilobed. ठीक है? Okay. Then digestion of food takes place by the action of HCl and gastric juices. ठीक है? Partially digested food called chyme. Amokesre madhyane babu, we have seen chyme and chyle. Yes. Chyle basically क्या होती है? The basic food. Chyme क्या होती है? Acidic food. तो जब स्टमक रू बाहरला, it is chyme. Then intestine आड़ों गला, वो हो गया chyle. समझ में आई बात? So chyme is basically acidic and chyle is basic, alkaline. ठीक है? Okay. तो chyme को टू गला, स्टमक से किधर जाएगा? Into duodenum जाएगा. How? Bile emulsions, the duodenum receives the bile from gallbladder through the bile duct. याद होगा. जेमती आमर अच्छी सब सेम थी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसा ही है. That is the reason why smartly, the human digestive system was actually removed, but frog is still kept. Why? Because the anatomy of a frog, and the physiology of the mechanism of the frog is similar. Okay. Now, and pancreatic juices from the pancreas through a common bile duct, CBD. Common bile duct माने कौन गिरे? Yes, the bile duct, by hepatic duct plus cystic duct. दुईटी मिसी गले आमे ताको common bile duct कही थाओ. Cystic duct माने कौन? जो duct टी तमरा gall bladder रू नहीं क्या सी, उसे हम लोग cystic duct कहते हैं. ठीक है? How? Bile emulsifies fat and pancreatic juices digest carbohydrates and proteins. ठीक है? Fine. Fats emulsified करा जाए. Emulsification माने breaking it into droplets so that it increases the surface area for the activity of lipase. Oh. Now, final digestion takes place in the intestine where everything is digested. Say carbohydrates से इतांतु, protein से इतांतु, lipids से इतांतु, nucleic acid से इतांतु, everything are digested. ठीक है? Then absorption code वाला, now villi and microvilli, small finger-like structures are present that help in the absorption, ठीक है, into the wall of the intestine. The undigested solid waste moves, ठीक है, into the rectum, through which into the cloaca and from there thrown out of the body. ठीक है? Because it is cloaca बोली गोटे नुआ word टी तम पाइलो. What is the नुआ word? What is the meaning of it? Cloaca is the common structure. Cloaca is the common structure. ये common structure है. That is common to both the common to urinogenital as well as digestive. Urinogenital as well as digestive. ठीक है? तो यूरिनो भी है, जेनाइटल भी है, as well as digestive भी है. That is what is cloaca. ठीक है? Then look at it. Respiratory system अगर आप देखो, as I have already mentioned, तो basically आंकर तीनोटी mechanism of respiration अच्छी in case of frogs. In water, जेहेतु मानकर गिल्स नहीं, they don't have gills. तो पानी में
सांस कैसे लेंगे? थ्रू स्किन, ठीक है। तो स्किन का काम क्या है? एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, फाइन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन निकला। तो इसमें dissolved oxygen etc present in water is taken up by the skin, ठीक है ना। अब देखो, अगर लैंड की बात आई, ठीक है, when it is on land then it is pulmonary. Atmosphere route directly the air can be taken in and the respiration carried out, ठीक है। तो ये आपकी pulmonary respiration हो गई। Then the another mechanism is bucopharyngeal. Bucopharyngeal. Now, bucopharyngeal is through the bucopharynx, ठीक है। तो इसमें the air is kept inside the mouth region, ठीक है। तो then it forms a bucopharynx, ठीक है जी। So basically, there are three mechanisms of respiration in case of the respiratory methods. One is the cutaneous respiration, the other is pulmonary respiration, and third is the bucopharyngeal respiration. Mane buccal cavity and pharynx both are involved, and directly to no hai, but indirectly bucopharynx is also related to pulmonary respiration only. ठीक है? बुझेला? Okay. Now, the lungs are a pair of elongated pink colored structures, ଯେମିତି ଆମର ଅଛି. So they basically help in the pulmonary respiration, ठीक है। तो जेमती जिबाग होता, एयर ट्रैवल करता है थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, द माउथ, द स्किन, इवन इनटू द बॉडी, वेयर इट इज बेसिकली कंज्यूम्ड, ठीक है, एंड देन द प्रोसेस इज कैरिड आउट स्मूथली, ठीक है जी। So pulmonary respiration, yes, cutaneous respiration, and finally the bucopharyngeal respiration. Okay, blood vascular में आओ. Now we have already studied this, but still then, just a reminder of things. एक बार देखो, anchor heart जो आप देखोगे, इनकी heart 3 chambered है. The heart is 3 chambered. Duity auricles and गुट्टे ventricle. ठीक है, ये तो दुइटी ऑरिकल्स गुट्टे वेंट्रिकल अच्छी। तो इसमें आपकी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, काहे की डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट ला? Because there is mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. Clear separation of the oxygenated and deoxygenated blood does not happen. तो एठी कौन है गला हमारे टा? The blood basically becomes mixed blood. Mixed blood, ठीक है, fine, okay. Now, तो सेम, बाकी सब सेम है. pulmonary arteries are there, pulmonary veins are there, vena cava is there, ठीक है. बट चेम्बर्स अगर देखोगे दो एडिशनल स्ट्रक्चर्स इनमें दिखते हैं. वन इज द साइनस वेनोसस, ठीक है, एक यहाँ पे ऊपर की तरफ रहता है, दैट इज साइनस वेनोसस, एंड जो कि बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज कोनस आर्टेरियोसिस. कोनस आर्टेरियोसिस ये है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है. Now, because of these two structures, you are able to apprehend the double circulation, which is incomplete and mixed type. ठीक है, fine. But remember, जेमती हमारो blood vascular system अच्छी, इनका भी same है, कोई ज्यादा difference है नहीं. Means you'll also have a myogenic heart, you'll also have all the cardiac muscles, etc., etc. तो ये सब चीजें इनमें भी है. Auricular chambers, auricular septum, ventricular septum, आपकी valves, tricuspid, bicuspid, जेमती आमर अच्छी इनका भी वैसे ही रहता है, ठीक है. As you can see, the structure of the conus arteriosus present here. Similarly, आपकी उसके तरफ sinus verusus भी रहता है. Okay, fine. Now, frogs have a lymphatic system also.
frogs also have a lymphatic system, ठीक है, which is made up of lymph channels and lymph nodes, ठीक. तो इनमें साइनस वेनोसस रहती है, कोनस आर्टेरियोस रहती है. In case of the frogs, right? The blood from the heart is called carried to all parts of the body by the arteries, fine. That is the venous system, arterial system, वगैरह वगैरह. How? Then, in case of the frogs, there's a unique form of a system that provides connection with the renal portal system. Okay, renal portal system only observed in case of certain amphibians and certain amphibians and reptiles. इनमें ही आपको दिखेगा. Fine. The blood cells are RBCs or erythrocytes. WBCs, white blood cells, or leukocytes. Now remember this. In case of frogs, the RBCs are nucleated. RBCs are nucleated. Okay. The lymph is different from blood. It lacks few proteins and RBCs. Fine. The blood carries nutrients, gases, water, the personal respective sites during the circulation. Circulation of blood is achieved by the pumping action of the heart. Okay. So basically what you observe is the mechanism is more or less the same. Nothing different in it. How? Elimination of urine. Now mark करो कि यहाँ पे you have the right kidney, the left kidney. जिनकी amocase से adrenal gland होता है उनका भी same है. They also have the same adrenal glands here also. ठीक है. Then you have additional structures like the ovaries here. ठीक है. No, sorry, the testis is here. Fine. तो इनमें जैसे यहाँ पे टेस्टिस है वैसे आपको फीमेल में ओवरीज में दिखेंगे. And here you have a fat bodies like this. ठीक है. Fine. And ureters. ठीक है. Fine. You'll find that in case of the males in the frogs, the urino and the genital system is united. Ekka sangere hochi. So there is a common connection between the urinary and the the genital reproductive structures. How? देखो. Elimination of nitrogen waste, ठीक है, is very well developed. Already renal portal system हमें 40 साल already, ठीक है. Now, इनमें होते क्या? Pair of kidneys. को प्रकार of kidneys स्थान थी मानो करो. Which kind of kidneys? Mesonephric kidneys. ठीक है. Cloaca and urinary bladder. Mesonephric माने they would have only ultrafiltration and some tubular part, ठीक है, where proper form of reabsorption and secretion may not be there. Oh. Each kidney is composed of several structural and functional units called uriniferous tubules. Amocase रे we call them nephrons, ठीक है. इनके केस में these nephrons are inferior. काहे की mesonephric है, ठीक है. So two ureters emerge from the kidneys in the male frogs. Ureters act as urinogenital duct. They also act as urinogenital duct. So therefore, they carry urine as well as the sperms or spermatozoa. Okay? The thin-walled urinary bladder is present ventral to the rectum. Okay? Opens into कहाँ पे? Cloaca. Sethipai urinary, digestive as well as reproductive. सबके लिए आपकी ये parts हैं, they are common. ठीक है. The frog excretes urea and thus is a ureotelic animal. ठीक है. So excretory waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted out. ठीक है. So basically ureotelic काहे because the primary excretory product in them is urea. ठीक है. Fine. Then coming to the endocrine and the nervous system here, control, coordination, integration में. Now, endocrine system अगर आप देखोगे तो chemical coordination में they also have several endocrine structures. जैसे हमारा होता है, you have pituitary, they have pituitary.
thyroid, parathyroid, thymus, pineal, pancreatic, islets of Langerhans, adrenals, and gonads. So almost all the endocrine structures are available. Pituitary है, thyroid है, parathyroid है, thymus है, pineal है, pancreatic है, adrenals है, gonads है. All of them are present in the endocrine system. ठीक है. Nervous में देखो, nervous system is organized into CNS, PNS, ANS, आमर जेमती अच्छी. Central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system comprising of sympathetic, parasympathetic. अच्छी. ठीक है. तो brain रहिला, central nervous system, peripheral nervous system, cranial nerves, spinal nerves, autonomic nervous system, sympathetic, parasympathetic, all. Now, I again say, our objective is not to go into the details because we are only doing a generalized study. There's no need to go into the complete details of all the things. Okay, only basics. जैसे आमो केस रे, the CNS अच्छी, the CNS is divisible into forebrain, midbrain, hindbrain, prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. ठीक है, उस forebrain में आपको मिलेगा cerebrum, diencephalon, midbrain में you'll have the thalamus, hypothalamus, epithalamus, etc. ठीक है, thalamus, hypothalamus, epithalamus, etc. Then in the the hindbrain part, you'll have the cerebellum, etc. Fine, cerebellum, foramen magnum, ये सब चीजें आएंगी. So therefore, the forebrain, midbrain, hindbrain, जेमती आमर अच्छी तांकर भी अच्छी. Same way, the entire brain is protected by the cranium. ठीक है, remember this. Easy है, कुछ नहीं. हाँ, यही part है. Let me show you one thing. A very important thing. Cranial nerves, spinal nerves. Cranial nerves मानकर 10 pairs of cranial nerves are there. Spinal nerves माना 10 pairs of spinal nerves are there. आमो के से cranial कितने होचंदी? 12 pair होचंदी. In humans we have 12 pairs of cranial nerves. Spinal nerve कितने होचंदी? 31 pairs होचंदी. ठीक है. So these are differences. इनमें कितने हैं? 10 pair है. ये याद रखिएगा. ठीक है. Then autonomic nervous system by sympathetic, parasympathetic means emotional changes, excitement, depression, any kind of abnormality which requires a sudden attention, like the adrenaline rush हुआ, epinephrine अधिक भारी हो. ठीक है. तो उन चीजों को आप autonomic में लेते हो, which is directly controlled by the autonomic nervous system. ठीक है. Fine. Sense organs रे, all the 5 are there. Hearing, taste, smell, touch. ठीक है. All are there. All. ठीक. How? Even vision. 5 senses है आपके. Vision है. ठीक है. Hearing है. Smell है. Taste है. Touch है. All the 5 senses are present. ठीक. Even the ear is also helpful in the balancing, like in case of us. Balancing रे मध्य साहाଯ୍य करिथाए. So it has both acoustic functions as well as the balancing functions. Now reproductive system में देखिए, suppose the male reproductive system which we look here, already we have seen because it is complementary to that of the urinary also. तो urinary and genital मिसी के होचंदी. मार्क करो यहाँ पे. If you look at the structure, ये male gonads है, that is testis. Now from the testis we have the urinogenital duct, and it terminates where? In the cloacal chamber via a seminal vesicle. बुझेला? तो testis through asila jabi, seminal plasma consisting of the sperms. It enters through the urinogenital duct and reaches the cloaca. From the cloaca, it moves out into the female reproductive tract. Okay? So testes basically are the major reproductive structures, gonads. They are attached to the wall, peritoneal wall, by mesorchium, mesorchium, mesovarium, the ligaments. Okay? Same hai. Then seminiferous tubules are present in the testis that help in the production of the sperms. ठीक है. 10 to 12 fine tubules that connect the testis to the kidney. ठीक है.
So they are known as the vasa efferentia. Emdi amaro kaisa hai? Seminiferous tubular bahalla. Yes, the retidestis, vasa efferentia, vano. Then you'll have the epididymis, then the vas deferens. यहाँ पे भी same चीज है. Seminiferous tubular bahalla, vasa efferentia आ गया. ठीक है. They enter the kidneys through the Bidder's canal. एठी जो important term टी अच्छी वो है ये Bidder's canal. This is important for you to remember because Bidder's canal good time माने frog रो important property, important characteristic. This is not available in case of humans, etc. Only available in case of certain amphibians and reptiles. Call it Bidder's canal. ठीक है? तो basically urinary को जाएंगी जो उठी मिसिला, the genital tract where it meets the urinary, that connection is the Bidder's canal. ठीक है? समझ में आया? Okay. Finally, it communicates with the urinogenital duct. Clear? It is both urinary as well as reproductive. Cloaca, the chamber where the urinary, digestive, and the excretory, the reproductive, all the three meet together. Urinary, reproductive, and digestive. So gastro, urinary, and genital chamber. Okay? That is the cloaca, common to all. Look into this female. Now, females is even more simpler kind ki. Females mano ko case re, there is no link between the urinary and genital. Urinary genital re कोनो सी link not है. Males का होता है, females का नहीं है. See, pair of ovaries and oviducts हो गया. तो ovaries में क्या है भाई? Paired irregular shaped structures है. As you can see, these are ovaries. Fine. Now, इनमें अगर आप देखें तो ovaries are the site of production of ova. सेटू बाहरला कौन? Egg. It is collected by the oviduct by fallopian tube जाको हमें कहूचे. And वहां से once it has come out, ठीक है? Then simply it has to be fertilized. Fine. So ultimately आसिगी এই জায়গায় in the cloacal aperture বা cloacal chamber missivo. But there is no common passage. There is no common passage between the urinary and the genital. ठीक है? So यहाँ पे होता क्या है? Once the ovary has released the ovum, ठीक है? The ova are shed into the body cavity from where they move into the oviducts. So oviducts बाटे कौन है? The posterior ends of the ducts are broad called ovis sacs. जेमती आमर of fimri अच्छी, ठीक है? And ampulla अच्छी. So that draws in the egg, ठीक है? Which open dorsally into the cloaca. The eggs are temporarily stored in these ovis sacs. Mature female frog can lay 2,500 to 3,000 ova per time. Fine. And once it is put into the cloaca aperture, वहां से बाहर निकलता है. Since the fertilization in case of frogs is external in nature, so male and female release their eggs and sperm simultaneously in water where the fertilization takes place. ठीक है जी? चलो ठीक है. The rest will continue. ठीक है? Thank you very much, people. Have a good day.